build back better. In our interactions with world leaders, including the recently concluded COP27, we have underlined the need for concentrated global action to take climate change as a priority. As the chair of the G77 plus China, we have led the demands of the Global South climate finance and climate justice to enable developing countries to cope with climate adaptation and mitigation challenges. But in addition to that, we have, alhamdulillah, been successful, and this is a success not only of the developing world that has long held this demand, but of Pakistan and the people of Pakistan, that following the devastation from this climate catastrophe, in our capacity as G77 chair, we have successfully negotiated to add on to the COP27 agenda, in addition to mitigation and adaptation, but the concept of loss and damage. Because it was only after we in Pakistan experienced the devastation of these floods that have resulted in a 10% loss to our GDP, that it became evident to us that there was no international financing mechanism for devastation, for loss and damage of this scale. And it was after our own experience that we joined the many countries that have long been demanding that loss and damage be added to the COP and global agenda. And we hope, if it was too late for the people of Pakistan to benefit from the lack of such an institution, that the next country, the next developing country to be affected, will be able to benefit from an internationally agreed upon mechanism for financing loss and damage. There should be no doubt in anyone's mind about the potential of climate change to reverse all endeavors for sustainable development goals. Climate change is one of the most national security threats that can ignite and deepen conflicts. And as we have witnessed, Pakistan is now ground zero for climate-induced disasters and must prepare for the challenges associated. Ladies and gentlemen, today the increasingly complex security environment poses multifaceted threats to national security and stability of the countries. With rapid advancement of technologies and proliferation of related knowledge, we are experiencing a visible change in the established security paradigm. In today's globalized world, the national security has emerged as a dynamic concept that is as much economic, political, social, and institutional as it is military and strategic in nature. In an age of fake news and disinformation, the threats to national security have increased manifold. The specter of rising global food and energy prices is putting immense strain on national cohesion and unity, thus deepening internal fault lines. It is our considered opinion that the best way to safeguard and strengthen national security is to achieve economic self-reliance, rebuild and strengthen political institutions, deliver the 21st century governance that is demanded and required, ensure rule of law, and put the people at the center of public policy. This requires a much needed reset in our thinking, as well as the way we conduct the business of the state. Internal consolidation can alone enable our nation to secure its core economic, foreign policy, and security interests. And in order to do so, each institution must function within not only their constitutional domain, but with a primary focus on their objective, on their national goal. For example, I am a politician, I am a parliamentarian, and I represent my constituency in Parliament. My job is to be answerable to Parliament, to be present in Parliament, and rather than lashing it out with my political opponents on the streets or in the public arena, we have created this forum where all people of Pakistan can be represented, where our exchange of ideas, our debate should lead to the addressing of issues of national importance through consensus,
so we can move beyond our consistent state of flux and focus on the priorities of our nation. Distinguished audiences, the new technologies led by this revolution in the field of artificial intelligence are playing a vital role in confronting various security challenges. In my view, the responsible use of technology advancement can make the world a better and safer place. Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability, and order. Reciprocity, mutual interests, and international norms are the guiding principles that govern Pakistan's relations and the bilateral and multilateral levels. In the regional context, the transformation of South Asian geostrategic environment has further accentuated the importance of this region in world affairs. Resultantly, regional cooperation and active engagement of regional and global players has become imperative, particularly to achieve regional peace, security, and socio-economic development. On the other hand, instability and turmoil that has beset our region for many decades also needs a firm and coordinated response by all stakeholders. We believe in meaningful dialogue on the basis of equality, not only to resolve bilateral issues, but also to unpack the immense economic potential of our region. It is here that the peaceful resolution of the long-standing occupied Jammu and Kashmir issue is, in light of the UN resolutions and aspirations of the Kashmiris, is central to establishment of sustainable peace in South Asia. Distinguished guests, it is heartening to note Pakistan's defense industry has now achieved a good level of quality and reliability, wherein its products are comfortably competing in the international defense market. Though Pakistan is now exporting some high-tech defense products to more than 60 countries, yet the volume of exports, in my opinion, is not commensurate to our actual and true potential. A crucial factor in this context has been the limited involvement of the private sector defense production and export activities. In addition, relatively less attention has been paid to academia industry interface and in the involvement of R&D organizations, which has curtailed the competitiveness of certain sectors of this industry. In order to achieve this objective, I will stress upon the integration of public-private defense industry to achieve maximum results. New ideas and the entrepreneurial and management skills of the private sector need to be co-opted with public sector defense industry. The potential of academia and R&D organizations needs to be incorporated with the defense industry for more efficiency as well as volume to our defense production exports. Our government, ladies and gentlemen, will continue to promote a business-friendly environment for investments in human capital and professional development in the demand-driven industry. The unity government is also committed to deliver an industrial strategy that contributes to growth and employment and encourages small and medium enterprises to come forward and join hands for the development of our defense industry. In this regard, I look forward to the Ministry of Defense Production's formulation of a clear policy framework to integrate the whole potential of Pakistan's defense industry. Distinguished guests, when we talk about the defense industry, International Defense Exhibition and Seminar is an iconic platform for showcasing the latest defense technologies and innovations. In fact, Ideas is a regional gateway for international manufacturers and suppliers to explore new avenues of defense cooperation through joint ventures, outsourcing, and collaborations. On the other hand, the presence of a large number of foreign exhibitors and delegates reflects Pakistan's deeply embedded and mutually beneficial relations with the international fraternity. I would say that Ideas is a shared vision for global peace, stability, and harmony amongst the community of nations. And the Ideas slogan, Arms for Peace, truly reflects Pakistan's principal stance in this regard. Ladies and gentlemen, before I wind up, allow me to appreciate the efforts of the Ministry of Defense Production, Defense Export Promotion Organization for successfully holding a series of ideas to exhibit the best
of Pakistan's defense sector and promoting international cooperation in the field of defense production. I applaud the continuous support of the federal and provincial ministers, the Pakistan Armed Forces, law enforcement agencies, and the government of Sindh for the successful conduct of this mega event. I'm also very pleased to know that the Pakistan Postal Services has issued a commemorative postage stamp to complement the holding of this very special edition of Ideas 2022 in the 75th year of the independence of Pakistan, and I am positive that this landmark event will achieve more progress in the years to come. I thank you all. Pakistan Zindabad. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। अभी तक तो बचत बाज़ार अच्छा जा रहा है, बदर एक्सपो की तरफ से जो लगाए। लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे तो यहाँ काफ़ी अच्छा था और इस साल भी काफ़ी अच्छा है रिस्पांस। पब्लिक का फुटफॉल थोड़ा सा मेरे ख्याल से और होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग इधर काम करने के लिए बैठे हुए हैं और बचत बाज़ार जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, तो बचत के अंदर लोगों को अच्छी खासी हम लोग बचत दे रहे हैं। जैसे ये आलू है तो मार्केट के अंदर आलू 3 किलो का आलू का बैग, आपको अगर 3 किलो आप आलू लेते हैं तो आपको बाहर मिलता है 220 रुपये तक का ऑन एवरेज प्राइस अप्रॉक्सीमेटली। हम लोग आपको दे रहे हैं 150 रुपये का 3 kg। जैसे ये प्याज आ गई, अब ये प्याज है, ये प्याज अच्छी प्याज है, सबसे बेस्ट क्वालिटी की एक्सपोर्ट की प्याज है, सेम एज आलू। तो प्याज आपको हम लोग दे रहे हैं 500 रुपये की यहाँ पे 3 kg, और बाहर आपको भी रेट पता है और मुझे भी रेट पता है कि 600 से कम रुपए के अंदर आपको 3 kg प्याज नहीं मिलनी। सेम एज हम लोग टमाटर देख लें तो टमाटर के अंदर हमारे पास काफ़ी अच्छा टमाटर पड़ा हुआ है, और अगर आप टमाटर का देख सकें तो टमाटर सारा बड़ा टमाटर है और सारा लाल और अच्छा टमाटर है। यही हम लोग 60 रुपीज़ के पर केजी हिसाब से हम लोग दे रहे हैं, और बाहर आपको 70 रुपीज़ का बाहर टमाटर पड़ रहा है। तो इससे ज़्यादा तो बचत, ईद से पहले ईद आ चुकी है, तो आई बी लाइक मैं बहुत खुश हूँगा कि आप लोग आएँ और इस चीज़ को अवेल करें। बाकी थैंक यू सो मच बदर एक्सपो, एंड थैंक यू सो मच बचत बाज़ार, एंड थैंक यू सो मच कराची। मेरा नाम मोहम्मद निश है और मैं बेरिया फार्मेसी बेरिया फाउंडेशन पाकिस्तान नेवी से मेरा ताल्लुक़ है। हमने एग्जीबिशन में जो है अपना स्टॉल ये लगाया है अवेयरनेस के लिए, मेडिसन की अवेयरनेस के लिए, कि जो हम आवाम को अवेयरनेस दें कि जो कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है जालियत व्याध लोग बनाते हैं, तो उस भी दें कि आप लोग जो है मेडिसन, मल्टी-नेशनल मेडिसन को देखें। और जो एक्सपो है ये आवाम के लिए बड़ा अवेयरनेस रखता है, और इस पे है कि आवाम को जो है हमारी आवाम को अपनी हेल्थ के बारे में जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये बदर एक्सपो इन्होंने बड़ा अच्छा एक इक़दाम उठाया है
लोगों के लिए, आवाम के लिए, और यहाँ की जो सर्विस बहुत अच्छी हैं। और बेरिया फाउंडेशन का यही है कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी आवाम है इन्हें मेडिसन डिस्काउंट पर भी मिले, और जो मेडिसन है वो जाली ना हो, और मेडिसन ओवरऑल जो है कंपनीज़ की हो। Merhabalar, Ergin Akyüz, Trabzon Silah Sanayi Dış Ticaret Müdürü olarak görev yapıyorum. Firmamız 1993 yılında Trabzon'da kuruldu. Entegre tam kapasite üretim tesisi, yarı otomatik tabanca üretimi yapıyoruz. Markamız Zigana. Firmamızda yarı otomatik silahlar Zig 14, 1911, PX9 polimer silahımız mevcut. Bunun yanında kendi üretimimiz ve kendi dizaynımız olan Zigana serisi, Zigana Sport FK modellerimiz de mevcut. आइडियाज़ 2022 जो कि वैसे एक बाइनरी इवेंट है, हर 2 साल के बाद होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से जब 2020 में हम इसको नहीं कंडक्ट करा सके तो ये अब 4 साल के बाद हो रहा है। तो उसकी वजह से अब इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और हम इंशाल्लाह पूरी तरह इसके लिए तैयार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 में जिस तरह कंडक्ट कराया गया था उससे मज़ीद बेहतर होगा और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा। इसमें हमारे पास काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशंस की कन्फर्मेशन आ चुकी हैं जो कि पूरी दुनिया के तमाम बरे-आज़मों से हमारे पास डिग्नेटरीज आ रहे हैं और एग्जिबिटर्स भी हमारे पास यूरोप, एशिया, हर तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा हम बहुत ज़्यादा एक जो चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये है कि न सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री उसके साथ साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी इसके लू में लेके आएँ और उनको भी एक आउटलेट दें ताकि वो दुनिया के सामने अपना जो
प्रोडक्शन है उसको शोकेस कर सकें। जब भी इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंटरनेशनल लोग भी आए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें एक बहुत बड़ा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं या जो हमारे लोकल लोग हैं, कि वो जो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज हैं, OEMs हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। और इसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल कंपनीज हैं, एट टाइम्स उनके भी जॉइंट वेंचर होते हैं बाहर के मुल्कों की कंपनियों के साथ। डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा साइन है। इस लेवल का ये एक इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और बहुत हाई लेवल, जैसा कि मैंने आपको बताया, आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ जब एक दफ़ा पाकिस्तान में इसका इनेकाद किया जाएगा तो इसका बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव मैसेज एक जो लोग यहाँ पर आएंगे वो लेके जाएंगे। उनको चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक बहुत बड़ा इवेंट करा सकता है। और तमाम तर जो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब हमारे साथ वो सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं है जो हुआ करते थे, और इस तरीके की चीज़ होगी। और आजकल जो फ्लड के बाद के जो हालात हैं, उसके बाद इस तरह का एक इवेंट कंडक्ट होना, ये हमारी इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम मरकत करवा रहे हैं, जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स में होगा। जिसका सेगमेंट 1 टियर 1 जो है वो आइडियाज़ के पहले ही दिन का इनेकाद किया जाएगा, और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इसी तरह जो सेकेंड टियर का जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट करा जाएगा, दैट बी द सेकेंड डे ऑफ आइडियाज़, उसके अंदर जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इस पे काम किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, वो आके अपना काम प्रेजेंट करेंगे। और ये प्रेजेंट करने वालों के अलावा दोनों दिन हमने अपने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स को इनवाइट किया हुआ, उनको सुनेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनसे सीख के जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू है कराची एक्सपो सेंटर से बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का जो आउटडोर एरिया है और जो एग्जिबिशन हॉल्स का एरिया है, इसके ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है। और इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन को मीट करते हुए स्टार्ट से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। सिंध गवर्नमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी पैटर्नेज हमेशा हमें मिलती रही है, पास्ट में भी मिली है। इस दफ़ा भी हमने खुद देखा कि हमारी जो 2 स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग्स थी, दे वर हेल्ड एट CM हाउस। CM साहब वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने उसको शेयर किया, और वहाँ तमाम सिंध गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स मौजूद थे। उनको जिस तरीके से CM की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली, वो तो बड़ा पॉजिटिव हमने इम्पैक्ट देखा कि जब सिंध गवर्नमेंट ने अपना साथ हमें दिया तो उससे चीज़ें बहुत हमारे लिए आसान हुई। फरिश्तों को शिकायत है कि या रब, बशरे गुमराह कम कोशिश भी है, नया इंसान कोई तख्लीक कर तो ये जाहिल भी है, बारे दोष भी है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। It's 2 p.m. ITIS 2020 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day session offers a platform for G2G, B2G, and E2 directions, joint ventures and investments in the production sector. A strategic seminar will also help to facilitate discussions on global challenges within the defense. The 12th edition of ITIS will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good evening to all of us. So today I would like to deliver presentations about development of 5G networks and warfare, its components and challenges. Next slide, please. So I would divide this topic into 4 subtopics. The first one is that I will give very brief introductions about 5G itself, the KPI, the use cases, the standardization roadmap, and so on. And then from subtopic 2 until 4, they are about the military. What are the 5G key enablers that can be used for the military? How 5G can be very beneficial or can be used for the future battlefields? And the last but not least will be, so what are some technical challenges in there that we need to consider? Okay, next slide. So I will start with this triangle, which is very famous in explaining about 5G. If I only have a slide, we can see here that in 5G, basically there are 3 very big use cases. The first one is called the massive broadband, which means that the speed is much faster than the existing 4G or even the 3G and so on. And then the next one, the bottom left. No, previous slide, please. Okay. The bottom left is about the massive machine type communications. So this is about so many devices are connecting to the network. For instance, in this kind of venue or in the stadium and so on, even if there are cellular signals, in most of the cases we cannot connect to the network. It is because a number of connectivity are limited. So in the 5G, this kind of problems is solved. So one big use case in the 5G will be massive machine type communications, which is later on will be used very much for the IoT, Internet of Things, and so on. And the third use case is about critical machine type communications. This is about the very low latency, even less than 1 millisecond latency. So using these 3 generic subcases or big use cases, then there are many possibilities, like using 5G for sense network, using 5G for industry 4.0, using 5G for streaming, using 5G for autonomous driving or semi-autonomous driving, and so on and so on. Next slide, please. So if we want to see a little bit detail, then the upper left or upper right picture is showing how we can compare the 5G with the 4G. So 5G is much better in all the aspects, and then we can see also in there several KPIs of the 5G, but I think it is quite difficult for you to read. But here I just want to show you that with all these KPIs, all this performance, we have very big possibilities to use it in various type of use cases. For smart cities, for mobile broadband, for the automated controls, real-time telematics, and so on and so on and so on. And of course, 5G is connected to the AI or on also the edge computing. Next slide, please. And in this slide, you can see that the standardizations of 5G is now still ongoing. We call it the release stages. Release 14, release 15, release 16, release 17, and so on. 2022, so the release 17 is already there, which means that the full set of 5G will be available in the market already. And some countries have launched the 5G. I think Pakistan is not there, but some countries like Korea, Japan, US, Germany,
Saudi and many countries have launched the 5G, so they can use all the capabilities. Next slide, please. And then, if we relate this to this event, actually, even though 5G is originally developed for civilian applications, recently there are many studies saying that 5G also can be used in defense. This study from Allied Market Research saying that global 5G in defense market is expected to reach 70,000 million US dollar. This is quite significant number. Next slide, please. Next. So, how 5G can be used for the defense? There are several key enablers. I don't know if you can read the slides because the fonts is quite small. But actually, there are some enablers in the 5G that is very significant for the military. The first one is the NFV, Network Function Virtualizations, in which most of the network functions will be virtualized. And then also SDN, Software-Defined Network. The network will be defined using software, not hardware. And also network slicing, which is the set of parameters can be very easily changed and done for different types of use case. And then orchestrations, end-to-end orchestrations. This one is using AI. And then cloud native, mobile edge computing, and of course, millimeter wave. Next slide. So all those key enablers, we can see that there are many studies, many research about using the 5G for the military. This is just a few examples, like the one done by LMT and then Finable and so on and so on. Next. Okay. So this slide explaining in brief about how this 5G can be used for military applications. Okay. The first and the foremost is that it can be used for the military decision making because of the quality of connectivity, the very low latency, and so on and so on. Several studies investigating about how 5G can be used for military decision making, and then also for smart warehousing and for distributed command and control in the battlefields. Even some studies are investigating about the use of the 5G for NTN, non-terrestrial network. Also for tactical communication. Tacticals means that in the battlefields, using millimeter wave so that we can use very high frequency, high directivity, and very low latencies. Also for the proximity service, PROSI, 5G for the AR, augmented reality, and virtual reality, also the mixed reality, and also for the geointelligence. These are some pictures, some pictures that is showing that how this 5G can be used and has very big potential for the military applications. Next. However, we can see that still there are some challenges in the 5G. The first one, click please, next, is related to the KPI challenges. Not all KPIs are there, but it is in the process. Next. The next one is about architecture. 5G is much more efficient than other G, than 4G, than 3G, of course. Okay? But if you can see here that the contribution of 5-layer algorithms is about 5 times. Contributions of spectrum is about 20 times. The biggest contributions come from the smaller cells. It is 1,600 times. So all these components is if it is there, then it is very good. But in fact, not all of them are there. Next.
And then the next one is the most important, I think the most important part here is that challenge of softwareizations. Okay, in the legacy network, in the 4G, software and hardware is interlocked together. Most of them are not open. Okay, and then in the 5G, there is so-called decoupling between software and hardware, so that we can develop the software and virtualize the hardware and so on and so on. And then post 5G, after 5G on 5G, it is not just decoupling but also orchestrated using AI. So these are the most important technical revolutions in the 5G. Next. Next one is about the bandwidth and delay. I think we can skip one, and then next one. Next, the next one is about the use of the IP version 6. Next one. So, as we can see that one of the things that have big impacts on the security in the 5G is softwareization. Softwareization means that NFV, SDN, edge cloud computing, and so on. All of them are softwareizations, and it has very big impacts for the security aspects. Next. 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 Okay. If we compare this 5G to 4G, then 5G is much better in terms of security, much more secure. The problem is that because 5G is more software, meaning that the security problem difference. So we need different approach of assessing the security of mobile cellular communications, like Lars said just now. Maybe we need to use the cybersecurity approach. That's what makes the 5G more challenging. It is much more secure than 4G. But because of this variety of use cases, meaning that it also increasing the surface of for attacks. That's why this is very big concern to use this 5G for military. Next slide, please. And of course, the security standard is still ongoing. Now, next. The problem is this one. Okay. Even if the standard is there, okay, the standard is the what we call it, the innermost rectangular. Okay. After that, there are some security issues which is depend on vendor development process, and then another security issues that are related to the deployment process, and then another security issues that are related to the operation process. That's why there are so many forums that are discussing about how we need to deal with this security issues in the 5G. 5G has very big potential to be used for the military, but there are so many challenges, technical challenges, software challenges, and the most important thing is that security challenges. So we need to do very important and serious research if you want to use this 5G for the military. Next. That will be the last slide from my presentation. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
बहुत ही बड़ा इवेंट के जिसमें अगर हम इंटरनेशनल डेलीगेट्स की बात कर लें, इंटरनेशनल ममालिक की पार्टिसिपेशन की बात कर लें, तो शायद पाकिस्तान का कोई दूसरा इवेंट जो है वो इसको मैच भी नहीं कर पाता। ये हमारा ट्राई सर्विसेज इवेंट है जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स मिलकर अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं और वहीं पर ही सारी दुनिया के लोग आके अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं। और कई सारे ऐसे जॉइंट वेंचर माजी में हो चुके हैं और इस दफ़ा भी इसके इम्कान बहुत दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की तमाम बड़ी कंपनीज वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल कंपनीज की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ अपना स्टॉल कायम कर चुकी है। आइडियाज़ 2022 जहाँ आर्म फॉर पीस जो उनका स्लोगन दिखाई देता है, जहाँ स्लेन की बात हुई है, वही एक खास टॉपिक इस आइडियाज़ 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। इस सिलसिले में एक प्रॉपर सेमिनार का इनेकाद भी किया गया और ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल को इससे आगाही दी गई। आज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं तो सारी दुनिया में ये ख़ास सब्जेक्ट दिखाई देता है और सारी दुनिया इस पर एक ख़ास फोकस करती हुई दिखाई देती है। मेरे साथ 3 हमारे मुल्क की बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत गुफ्तगू के लिए मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस वक्त ये किन किन चीज़ों में हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है। इंतहाई अहम शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, क्लाउड एंड मेटावर्स आर्किटेक्ट CEO पैरा क्लाउड और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं ज़ियाउल्लाह खान साहब। थैंक यू ज़िया साहब, बहुत थैंक यू। उनके साथ MNP के बिजनेस हेड है मूलर एंड फिप्स के और इसके साथ साथ आप ज़बरदस्त किस्म की इस मामले में भी बड़ी एक्सपर्टीज रखते हैं अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुजम्मिल अतर साहब। थैंक यू मुजम्मिल साहब। जबकि उनके साथ बड़ी जिम्मेदारियां, अहम जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, आइडियाज़ के साथ भी जुड़े हुए हैं और जहां मुल्क में कोई मुश्किल आती है वहां पर ईसा लैब बहुत आगे दिखाई देती है। CEO ईसा लैब फरहान ईसा साहब। थैंक यू वेरी मच फरहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान ज़रा शुरू करते हैं ज़ियाउल्लाह खान साहब से। ज़िया साहब, सबसे पहले तो आम लोगों को, मुझे भी नहीं पता, तो मैं आम लोगों की बात करूँ, हम बिल्कुल आम लोग यहाँ बैठे हुए, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कि नॉर्मली जो कंप्यूटर प्रोग्राम है ना, जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें इंटेलिजेंस है, मगर वो बिल्कुल नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि उसको कि भाई आपकी एज अगर 65 पर है तो प्लीज़ आइडेंटिफाई करें इनको ब्लड ना इनसे। अच्छा, ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है जो आपकी एज पूछ के उसका जवाब देता है। मगर इसके बरलाफ तो ये नॉर्मल अभी जो हम ज़िंदगी में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं होते। मगर जो आम आदमी इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने लगा है, आप फेसबुक पे जाएं, अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं, वो आइडेंटिफाई करता है कि तस्वीर में कौन कौन लोग खड़े हैं आपके दोस्तों में और उनको ऑटोमेटिकली टैग कर। अच्छा, आज सिंपल सा प्रोग्राम नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम है जो तस्वीर को देख के आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये जाए। तो इसके लिए आपको नए किस्म के प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। तो जो पुराने किस्म के जो प्रोग्राम है जो मोस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं होती। अगर ये जो नए किस्म के प्रोग्राम है इनमें एक्सटेंसिवली इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। नए प्रोग्राम क्या है वो अब मिसाल के तौर पे टेक्नोलॉजी के मैं अंदर नहीं जाना चाहता हूँ कि एक आम आदमी के लिए प्रोग्राम है, मगर लुबिला आप ये देखिए, इस तरह समझे आप कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना पहले तो ये होता था कि, और अभी यही होता है कि हम क्या करते हैं कि उसको ना ट्रेन करते हैं। ट्रेन से मतलब है कि हम क्या करते हैं, वो ना जैसे मेरी 10 तस्वीरें दिखाएंगे उसको। अच्छा, हम आम जी में मुझे आप कैसे पहचानेंगे? मुझे 2 दफा लिखा होगा तो पहचानेंगे आप। अच्छा, कंप्यूटर भी अब इस तरह करने लगे कि आपको लॉजिक खुद नहीं लिखनी पड़ती, तस्वीर देख के भी आपने उसको कहा ये तस्वीर है, ये ज़िया है, तस्वीर है, ये ज़िया है। अच्छा, 10 दफा किया ना, तो वो ऐसा प्रोग्राम है जो उससे ये मतलब निकालते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं कि ये ज़िया है। तो फिर आइंदा कोई नई चीज़ दिखाई जाए तो वो मुझे पहचान लेंगे कि ये भी ज़िया है। तो इस काम के लिए ये समझना जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस वक्त जो टेक्नोलॉजी यहाँ पहुंची है, आपको प्रोग्राम को ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप ट्रेन नहीं करेंगे, यानी डेटा चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो जुड़ी हुई है साइंस, वो है डेटा साइंस। तो आपको जैसे हमारे पास लैब्स के वो बैठे हुए हैं, अगर अभी क्या होता था, ब्लड आया, ब्लड खुरबीन में वो देखता है डॉक्टर, आइंदा क्या होगा, और अभी भी हो रहा होगा, इनके पास भी हो रहा होगा कि तस्वीर से डायग्नोज उसको बहुत सारी दिखाते हैं, मगर ट्रेन करना पड़ेगा, डेटा ही होगा। और फिर खा के कि यार ये कैंसर है, फिर जब वो नया कैंसर देखेगा तो फौरन पहचान जाए कि ये कैंसर है। तो पहले इंसान कर सकते थे, सिर्फ आप मैंने भी कर सकती हैं। मैं कहना चाहूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से आप
यूज करते हैं आम जिंदगी के अंदर, क्योंकि एक एक्सपर्ट इसको ज्यादा और बेहतर बता सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, जियाउल्लाह साहब खुद एक जबरदस्त किस्म के एक्सपर्ट है, लेकिन आईटी सेक्टर के थ्रू इस इंटेलिजेंस को किस तरीके से सामने लाया जा सकता है? मैं बात शुरू करने से पहले ज़िया साहब मेरे साथ हैं, ये साथ बैठना ही मेरे बड़े फ़ख्र की बात, क्योंकि इनका जो तारुफ ने कहा वो बहुत मुख्तसर तारुफ है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग के अंदर समझ इनके साथ बैठना ऐसे ही है कि सूरज के सामने आप चिराग रख दें तो इनके सामने ज़ाहिर बहुत ही छोटी बात, नॉर्मल बात कर सकते। ये एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का जो इनिशिएटिव है पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर की एक्सपर्ट्स को बनाने का, उसके अंदर सबसे बड़ा काम प्रेसिडेंशियल के ऊपर प्रेसिडेंट पाकिस्तान आरएलवी साहब के साथ मिल कर रहे हैं इस वक्त। तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती है हमारी, एक बहुत बड़ी शख्सियत दरमियान में आप जब बिठा दिया है तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहरहाल एक काम हम लोग है जिसकी उन्होंने तवज्जो दिलाई। इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा काम कर, में दो टाइप हैं, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन दो चीज़ों के अंदर जिस तरह ज़िया ने बताया, शुरू के अंदर जो मामूली चीज़ें होती हैं नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं, और उसके बाद जो अब इसके अंदर आगे बढ़ते ले आते हैं। जिस तरीके से एक की तारीख में जो गूगल असिस्टेंट, अगर आप बात करें एप्पल की तो वो एआई के तौर पर सी को इस्तेमाल करता है। इसी से जो स्मार्टफोन्स हैं उसके अंदर उसके साथ अलेक्सा इस्तेमाल है एंड्रॉइड के अंदर। तो ये डिफरेंट टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेफिनेटली सबसे ज़्यादा जो पावरफुल समझी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो के अंदर सिरी को किया जाता है। गूगल सर्विस को बहरहाल ज़्यादा फोकस हासिल बात सिरी, उसके बाद फिर जो है वो को। इसके जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कहाँ पहुँच चुकी, आपका फोन आपसे ज़्यादा बेहतर जानता है। मैं इसकी चंद एक मिसालें दिलचस्प आपके सामने रहा। आप दिन में कितनी दफ़ा कौन कौन से जगहों के ऊपर विजिट करते, इसका डेटा आपके फ़ोन के अंदर महफूज हो रहा है, आपके नेट्स के साथ, आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड साथ महफूज हो रहा है। उस जगह की निशानदही जो उसके पास पहले किसी का प्रोग्राम में सेव होती है, तो वो निशानदही है कि आया ये जगह आपके काम की जगह है। वो जब टाइमिंग देखता है, सुबह आप 10 या 9 बजे एक जगह दाखिल होते हैं और वहाँ से 6-7 बजे निकलते हैं, तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये इसकी वर्क प्लेस है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने फोन के अंदर भी जो रोजाना जाने वाले लोग हैं, जब वो गूगल मैप्स के अंदर जाएंगे तो आप वर्क प्लेस की आ रही होगी, आपने कभी ऐड नहीं किया उस वर्क प्लेस को। इसी तरीके से टाइम चूंकि ज्यादातर घर के अंदर गुजारते हैं, मैं सहाफियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कि जो ज्यादातर चूंकि वो शाम के से लेकर सुबह तक का घर पर गुजारते हैं, इस वजह से वो उनकी होम की कैटेगरी के अंदर नजर आ होता है। अच्छा, इसी तरीके से चूंकि सैटरडे संडे का दिन डेफिनेट घर गुजारते हैं, तो इसी तरीके से आप अगर एक टाइम के अंदर घर चलते हैं और एक जगह हैं, तो उसको डिटेक्ट है कि मस्जिद जा रहे हैं, तो आपके में ये निशानदेही है कि आप मस्जिद जाने वाले हैं और दिन इतनी दफा, यानी आप 5 वक्त के नमाजी हैं, 2 हैं, 1 वक्त के हैं, जुम्मा नमाज पढ़ते हैं आप आ रहा है। अच्छा, इसके बाद फिर आप जिन लोगों से मुलाकातें करते हैं, अच्छा आप एक शख्स है जो स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर है, वो उससे मुलाकात करते हैं, आप हफ्ते में 1 मिलते हैं, 2 दफ़ा मिलते हैं, या महीने में 2 दफ़ा मिलते हैं, उससे आपकी शख्सियत के बारे में गेज होता है कि आया आप एक खिलाड़ी से मिलने के लिए जाते हैं रेगुलर बुनियादों के ऊपर, आप एक इस्लामिक स्कॉलर से मिलने के लिए जाते हैं, आप एक डॉक्टर के पास मिलने के लिए जाते हैं, डॉक्टर फिर वो किस फील्ड का डॉक्टर है, बिकॉज वो सारा डेटा डॉक्टर कभी बैकएंड के ऊपर गूगल के ऊपर या सिर्फ है, तो वो उसको लिंकेज क्रिएट करता है। आज की तारीख के अंदर अगर आप इंटरनेट पर जाएं, उनको सिर्फ बात की जरूरत होती है कि आपकी फेसबुक या आपकी गूगल की आईडी उन पास मिल जाए, उसके बाद वो आपके बारे में मुकम्मल मालूमात आपसे ज़्यादा बेहतर उनके पास आ जाती हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो फैसला करते हैं कि आइदर आपको वीज़ा देना चाहिए या आपको वीज़ा नहीं देना चाहिए, आप वाकई मुल्क की ज़रूरत है या आपके उनके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। तो ये आपको मैं इसकी बहुत ही मामूली मिसाल दी, जिस तरह ज़िया फरमा रहे थे कि जो तस्वीर है, उस तस्वीर को देख के अब एक दिलचस्प बात यह है, अगर आपके बच्चों की बचपन की तस्वीरों की बुनियाद के ऊपर वो साल ब साल हर साल की तस्वीरों को चेंजेस के साथ आपको दिखा सकता है, और इसके लिए आपको कोई और काम फीड करने की जरूरत नहीं। गूगल ऑलरेडी ये काम बैक के ऊपर आपके कहर कर रहा होता है। आपकी तस्वीर डिटेक्शन चेंजेस के साथ के 1 साल के बाद आपका अगर एक बच्चे जिसका नाम लेट से राफिया है या राफिया है,
वो उस डेक करता है कि बचपन इसकी ये था, उसके बाद 1 साल ये हो गया, 2 साल के बाद ये हो गया, और 15 साल के बाद इस कंडीशन के अंदर है, तो वो पूरी तस्वीरों की ट्रेल वो आपके सामने रख देता है। मेरी बात लंबी होगी, लेकिन मैं एक्चुअली बताना ये चाह रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त आपकी जिंदगी के अंदर किस लेवल तक शामिल हो गई है। बिल्कुल सही बात है फरहानी साहब, किसी के प्रॉब्लम जो है उसको टेस्ट के लिए आपके पास आना पड़ता है। जिसके से अभी हम बात कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये तो आपके शोबे में भी बड़ी करामत साबित हो सकती है, डाटा वगैरह के हवाले से, या अगर कौन से टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, किस सीज़न में हो रहे हैं, तो ये तो इंटेलिजेंस आपके लिए भी बड़ी करामत हो सकती है। जी, ये तो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने यूज़ शुरू कर दी है। ख़ास तौर पर रेडियोलॉजी के अंदर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन्स, एमआरआईज़ हैं, उस हज़ारों, जिस तरह से सर ने कहा कि वो उनकी इमेजेस और उनके रिजल्ट्स वो फीड हुए और कंटिन्यूसली डाटा उनके को दिखाया जा रहा है। और अब जो है वो, बल्कि हमने भी स्टडी करी जिसके अंदर तकरीबन हमारे 45,000 इमेजेस थे, और उसमें जब हमने देखा तो 45,000 इमेजेस फीड करने के बाद हमें पता ये चला कि 25 इमेजेस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चीज़ें पकड़ ली थी और ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट ने मिस कर दी। अब आप बता अच्छा, दूसरा ये हुआ है कि कोविड में डॉक्टर्स आ नहीं रहे थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो ये हमने स्क्रीनिंग के तौर पे यूज़ करना शुरू किया था कि जो नॉर्मल रेडियोलॉजी की चीज़ें हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, वो स्क्रीन्ड हो जाएं और एबनॉर्मल वाली जो है वो रेडियोलॉजिस्ट के पास आ जाए। इसी तरह से टेस्ट होते हैं, जैसे ख़ास तौर पे डेंगू आ रहा है और उसके साथ दूसरे टेस्ट भी हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन है, लिवर के हैं, तो इनका डाटा भी कंपाइल होकर रिजल्ट्स निकलते हैं। जैसे इस दफ़ा जो डेंगू आया, हमने अनाउंस किया कि वो, वैसे कहते हैं ना ब्लीडिंग हो जाएगी और दूसरे मसाइल होते हैं डेंगू में, लेकिन इस दफ़ा लिवर फेलियर के साइन सिम्टम्स आए, तो हम लोगों ने तो ईसा लैब ने ये शुरू कर दिया है। अच्छा, फिर हम लोग ना बायो सेफ्टी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। कोविड ने जब आया था, उसकी एपिडेमियोलॉजिकल के जो डेंगू जब इंडियन बॉर्डर्स पे आया था, तो हम सर्वेलेंस कर रहे थे और हमने कहा ये कराची पाकिस्तान आ जाएगा जो आ। फिर चिकनगुनिया एक और बीमारी बॉर्डरिंग टाउन्स पे आई, हमने पहले से बताया था कि उसका मच्छर भी यही है और यहाँ तक पहुँच गई है, ये आ जाएगी। और उसके बाद एनसीओसी के साथ मिलके भी हमने इसी के साथ काम किया, और उसके आई थिंक मैं बहुत मुबारकबाद भी दूंगा इस इदारे को। एनसीओसी जो बना, जनरल हमूद को चेयर करते और जनरल हुमायूं साहब कमांडर कराची थे, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हुआ, और आज आइडियाज़ के भी बानी तरह से जो भी हो रहा है। जनरल हुमायूं का एक और चीज़ भी हुई कि जनरल हुमायूं साहब ने जो सबसे बड़ा काम किया, तो उन्होंने इंडियन कंट्रोल स्पेशलिस्ट को, जो पहला, जहाँ पे हम आज बैठे हुए हैं, यहाँ पे पहला पाकिस्तान का कोविड सेंटर जो स्टैब्लिश हुआ, वो जनरल हुमायूं की वजह से हुआ जी। और जी अभी हैं वो, और ने कल भी उनको मुबारकबाद दी। और इधर का जो एक्सपो सेंटर स्टैब्लिश हुआ, उसके 2-3 बड़े पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया को नज़र आए और पूरे पाकिस्तान को आए। पहले तो यहाँ पे एक ऐसा मॉडल बना कि जो यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स थे, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में काम हुआ। आपको बताऊं, ये वो रिकॉर्ड है, जनरल हुमायूं थे, जीओसी जनरल अकील थे और ब्रिगेडियर शहजाद होते 25 मैक के उस ज़माने में, इनकी, और फिर बाद में जनरल नदीम अंजुम थे। उसमें हुआ ये कि एक डॉक्टर, एक नर्स, एक पैरामेडिक स्टाफ, एक सफाई वाला, जो रेड जोन जहाँ पे पेशेंट से, मैं यहाँ पे हमारी ईसा लैब की सर्विसेज दी पहले दिन से आखिरी दिन तक, एक शख्स को भी इधर जो काम कर रहा था, एक को कोविड नहीं हुआ, और इससे पूरी दुनिया हिल गई, जिसमें सारी मैकेनिज्म्स इस्तेमाल हुए। सेकंड चीज़ है डेथ रेट, यहाँ पे बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग ऑफ द डिजीज़ ऐसी हुई कि यहाँ पे डेथ रेट ना होने के बराबर था, जबकि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर मरीज तो मरे ही मरे, खासतौर इंडिया के अंदर पैथेटिक उनकी कंट्रोल्स थे, ज़ीरो, और उनको तो बल्कि पाकिस्तान से हेल्प लेनी चाहिए थी, और उन्होंने, और सेकंड चीज़ ये हुई कि वो हेल्थ वर्कर्स थे, उनको भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं और ये जो आइडियाज़ हैं, और आज हम भी यहाँ पे मौजूद हैं, कि जो सिविलियंस और बिजनेस कम्युनिटी, आर्म्स फॉर पीस और सब जो मिल काम कर रहे हैं, आई थिंक कि ये इंडेवर्स जो हैं, जो कोविड में नज़र आए और रिकॉर्ड्स बनाए पाकिस्तान ने, डेथ रेट हार्डली हो सकी, आई थिंक कि ये हर जगह पे होगी। और पाकिस्तान जिस तरह से अभी प्रोग्रेस कर रहा है, और जितना हमारे आर्मी चीफ जिस तरह से चीज़ें गाइड कर रहे हैं, आई थिंक वी विल डू वंडर्स। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरह से इन्होंने पहले दिन सेमिनार में डाला, आपको मैं बताऊं, हम नॉट ओनली अ मेडिकल कम्युनिटी जो बायो सेफ्टी, बायो सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं, ज़रूरत है, ये नेसेसिटी है, ये एक रियलिटी है, और इसमें जो ये इसके ऊपर और भी ज़्यादा काम होना चाहिए। इसकी जो हाईलाइट आइडिया ने किया, आई थिंक इसने एक तहलका मचा दिया। मुबारकबाद सारे ऑर्गेनाइजर्स को। किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझ में आ गया कि ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है आने वाले सर में। ये दिफाई नुमाइश में हमारा डिफेंस सेक्टर, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे डिफेंस सेक्टर में कितनी करामत है? असल में हमें ये देखना चाहिए कि मेरे ख्याल से हम कोई 10 साल दूर हैं
आयन करें वो दुनिया जहां पे मुल्कों को अपनी फौज ना उतारनी पड़े, रोबोट उतार दें। अब इमेजिन करें मुल्क अगर ये कर पाए कि एक भी उनकी कट ना हो और सब रोबोट्स हो, तो ये दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। और जो इस मैदान नहीं होगा उस बेचारे की हालत सोच के, वो तो इंसान उसका मेरे जैसा इंसान का, और दूसरी रोबोट होगा तो जीतेगा कौन? रोबोट ने जीतना है। अच्छा फर्ज करें नहीं भी था वो, तो कोई मसला नहीं, नया बना के फिर दोबारा ले आएंगे। जान नहीं जा रही, किसी की जान नहीं जा रही। मैं तो होली इररिप्लेसेबल हूँ, इंसान तो इररिप्लेसेबल है, मगर जो चीने तो कोई मसला नहीं है यार, गलती भी हो गई या। अच्छा तो पॉइंट ये कहने का है कि मैं यहाँ आने से पहले, आज की आपसे मीटिंग से पहले जरा से पढ़ के भी आया, ट्रांसपोर्टेशन से लेके मिलिट्री, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सामान, आपको पता है लॉजिस्टिक सबसे होता है वॉर में। वाले साहब भी फौज में थे, जिस वक्त एक वो चलती है तो साल उसके पूरी हजारों ट्रेनें होती हैं, हजारों ट्रक होते हैं उसका सामान मूव करने के लिए। अब जब ये ऑटोमेटेड गाड़ियां आ रही हैं तो जितना अगर आपका 1 लाख आदमी डिप्लॉयड होता है तो 10 लाख आदमी उनको पीछे सपोर्ट करने के लिए होता है। क्या कहते हैं, मगर अब क्या होगा कि ये पहले जो स्टेज में कि ये वाले जो काम है ना वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता ही है इस वक्त सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पे और की सड़कों पे ऑटोमेटेड गाड़ियां घूम रही हैं जिनमें कोई ड्राइवर नहीं है। तो इमेजिन करें कि जो सारा ये आर्मी का सबसे पहले जो होगा वो होगा, फिर ट्रेनिंग। अब ये जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट आया है, ये वर्चुअल रियलिटी का और ऑगमेंटेड रियलिटी कॉन्सेप्ट आया, इसके तो ट्रेनिंग आपको एक्चुअली जहाज के पेट को एक्चुअल जहाज में बिठाने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल रियलिटी में ट्रेनिंग दी जा सकती है और इस सिपाही की भी दी जा सकती है। मेटावर्स थोड़ा अच्छा देखिए, मेटावर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये आजकल पॉपुलर किया है हमारे फेसबुक में और उन्होंने नाम भी मेटा चेंज कर लिया है। मेटावर्स में ये है कि हम क्या करते हैं कि देखिए अभी आप फेसबुक देख रहे हैं ना, तो आपके स्क्रीन पे फेसबुक है, तो आप फेसबुक से बाहर हैं, आप बाहर से देख रहे हैं फेसबुक को। आप जैसे अभी कोई 15 दिन पहले मेटा क्वेस्ट प्रो उन्होंने VR ग्लास लगाए और थोड़ा सा AR का कॉन्सेप्ट भी है। VR क्या वर्चुअल रियलिटी है, आप जब वो ग्लासेस लगाए आप समझे, मैं उसमें मैंने माउंट एवरेस्ट कभी नहीं देखी, तो मैंने पहला कहाँ तक किया कि माउंट एवरेस्ट के देखने शुरू किए वर्चुअल रियलिटी में। तो ये आपको मैं बता सका हूँ कि जीरो किधर है, बेस कैंप किधर होता है, उससे ऐसा आता है, फील आती है, 60% फील आती है। मेरी बहुत अच्छी एक कोलीग है, वो हमेशा कहती है तो जब मानूंगी मेटावर्स, जब आप मेटावर्स खाना भी खा सकें। अभी तो वो तो दूर है कि खाना खा सके, मगर देखिए हवा की फील नहीं होगी अभी आपको, क्योंकि हम अगर वहां होते माउंट के नीचे तो वहां पे हवा चल रही होती, ठंड होती, तो वो तो नहीं है, सारी बात है इस स्टेज है। मगर जो आंखों से नजर आता है और इन कानों से भी जो अभी कानों से जो आप महसूस करते हैं वो सब महसूस हो रहे हैं आपको, तो क्योंकि वो माइक थ्रू और आप जैसे मिसाल तौर पे आप नॉर्मल चीज नहीं देखना। देखिए खराबी क्या है कि आप जो कैमरा में दिखाना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं, वो 360 डिग्री व्यू दे रहा है। अगर करें मैं फोकस करने जा रहा हूं कि फला आज का सान जो सामने रखा है, मैं इक्विपमेंट ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, मैं अजम्पशन ले तो मैं इक्विपमेंट फोकस करूंगा, मैं बाकी को इग्नोर कर दूंगा। क्रिकेट में भी करें, कोई आदमी ये खास बाबर आजम है, तो बाबर आजम मैं देखना ही नहीं चाह रहा बॉल, मैं तो चाह रहा हूं कि बाबर आजम फील्डिंग कर रहा है, मैं उसको देख रहा हूं कि वो तो मैं क्या करूं, वहां पे टर्न करूं, वो आपको सारा सेंस कर रहा है चारों तरफ कि आपका मुंह कैसे, और ये सब कनेक्टेड है AI से। ये AI बगैर पॉसिबल नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि बगैर मेटावर्स भी, ये जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो उसमें AI का बहुत मेजर हाथ है इनेबल टेक्नोलॉजीज में। और इसी तरह आप क्या कहते हैं, तो ये दुनिया बदल जाएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए क्रिटिकल तरीन है कि देखें हमारे पास एजुकेटेड पॉपुलेशन, इसलिए आरिफ अलवी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने से 3-4 साल पहले प्रोग्राम शुरू किया था मास लेवल पे ट्रेनिंग देने का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो माँ बाप ना अपने बच्चों को दुनिया के लिए अगर तैयारी करेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाए, पाकिस्तान के लिए भी होगी और इंडिविजुअली लोगों के लिए। कितना लेट है हम? लेट तो है हम काफी लेट है, लेट नहीं है। अगर अभी कवर कर देखें आप इससे अंदाजा करें, जबकि हमें इस तरह कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, मगर फिर आखिर में तो दुनिया में कंपैरिजन नहीं होता है। इंडिया की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट $150 बिलियन है, हमारी 3 है, तो 100 में और 3 में तो काफी फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क है। और देखिए इस वक्त हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एजुकेटेड यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा जब भी सारा इससे मसला हल हो, अच्छा बच्चे इंटरेस्टेड भी हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो सारे खुद फेस पे पले बड़े, मोबाइल आप बच्चे आपसे ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे बल्कि आपको सिखाते होंगे, काम उन्हीं से करवाने में तो बच्चे बहुत आगे हैं। मसला क्या है कि जो हमारी पुरानी जनरेशन को ये समझने की जरूरत है कि यहाँ रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे और उसके लिए ट्रेनिंग
और अभी हम एज ए कंज्यूमर तो कर रहे हैं। देखिए फेसबुक जो है पाकिस्तान में बहुत कमा रहा है पाकिस्तान से, बिल्कुल सही। और दूसरी कंपनियां कमा रही हैं, मगर हम यूजर हैं तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करने में, मगर प्रोड्यूस करने में हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो आगे चल के और मसला हो जाएगा। अभी तो है ही, और मसला हो जाएगा। आप कभी वबाओं की गुफ्तगू चल रही होती है, कॉन्गो वायरस अफ्रीका से नहीं आ रहे हैं, वो जरा चेक करना चाहिए, ऑटोमेटिक पता चल रहा होता है कि कहाँ पे ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। लेकिन कोई नया वायरस आने वाला है, दुनिया के किस हिस्से को मुतासर कर सकता है, इसकी भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम हो रहे हैं? देखिए काम तो बहुत हो रहा है। थोड़ा सा ये है कि हमारे ना अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हो पाता है ना इस मुल्क के अंदर, तो वो हमारे थैंक्स टू आवर आर्म्ड फोर्सेस ही हो पाता है। पॉलिटिकल विल का जो वैक्यूम है ना, वो हमें बड़ा डिस्करेज कर रहा है। आज आईटी इंडस्ट्री जिसे से बात करी, इंडिया तो चले बड़ा मुल्क है ना, आप कह सकते हैं कि बड़ा मुल्क है इसलिए उनकी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गई, लेकिन फिलीपींस तो पाकिस्तान से भी छोटा मुल्क है, उसकी 24 बिलियन की एक्सपोर्ट है आईटी की। तो ये तो पहले तो ये है कि हम तो गुजारिश यही करते हैं कि जो हमारी जो पॉलिटिकल विंग लोग जो हैं वो अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं बना सकें तो इंटरफियर करना छोड़ दें। पहली गुजारिश ये, अगर आज कोविड पे कंट्रोल हुआ तो ये एक एनसीओसी जैसा इदारा बना था। देखिए हमारे पास जो अगर मेडिकल और इसकी काम के बारे में बात करें ना, उसका मैं एक चैलेंज को इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उससे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल 18 अमेंडमेंट आई, 18 अमेंडमेंट से हुआ ये कि हेल्थ हो गई डिवॉल्व सूबों के पास। तो जो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है कि नेशनल स्पिरिट में कोई पॉलिसी बनाई जाए सर्वेलेंस की, तो अब ज़ाहिर सिंध तो सिंध बनाएगा ना, पंजाब पंजाब की बनाएगा। मैं गुजारिश ये करता हूँ इंपॉर्टेंट आपका इवेंट के ऐसे डिपार्टमेंट सेक्शंस हैं, हेल्थ हो गया जैसे, जिसमें नेशनल पॉलिसी बनना बहुत ज़रूरी है और उसकी कोलैबोरेशन नेशनल इदारों के होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जाती है, तो अगर ये जाए तो ये सारी चीज़ें होंगी एनसीओसी के थ्रू ही हो सकता है, फोर्स के थ्रू ही हो सकता है जी, वरना कोई पॉलिटिकल क्योंकि फोर्सेस ही एक वाहिद ना पूरे पाकिस्तान जी, चारों सूबों में नहीं वो ये तो एक ये, और इसी को तो कर रहे हैं ना लोग आजकल। हो ये रहा है कि हर मुल्क की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। पाकिस्तान की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है वो रिस्पेक्टेड आर्म फोर्स है। कोई मतलब दूसरा और एग्जांपल भेजता हूँ, साउथ कोरिया की क्या है, साउथ कोरिया की मैच्योर डेमोक्रेसी है। ईरान की क्या है, नेशनल स्पिरिट है। ईरान में 30% से ज़्यादा जो लोग हैं वो अरब्स, टर्क्स और कुर्ड्स रहते हैं, किसी को नहीं पता। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे मुल्क की है, आज अगर देखें ये जो हमारे डिफेंस का एक्सपो सेंटर लगा हुआ है आर्म्स फॉर पीस के शोबे से, और एक्सपोर्ट करने के बारे में और कोलैबोरेशंस डेवलप करने के लिए इससे ज़र मुबादला आएगा, इससे एक इमेज बिल्डिंग होती है। आज दुनिया के जनरल्स और सारे स्टेट मिनिस्टर ऑफ जो ये जो डिफेंस आए हुए, तो आज वो पीस का एक मैसेज लेके जा रहे हैं दुनिया में। ये चीज़ें साथ होना, कंबाइन होना, और डेफिनेटली आर्म फोर्सेस लीड करेंगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो ये चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। और आज जो टॉपिक उठाया गया है वो भी आइडियाज़ पे इन्हीं लोगों ने उठाया है जो आज सारे अखबारों की जीनत बनाया और लोगों को थॉट प्रोवोकिंग पे लगाया हुआ है इसने। अच्छा, एक बात मैं बस खत्म थोड़ा सा बात को शॉर्ट करते हुए, वो ये है कि आज के बाद जो फ्यूचर वॉरफेयर होंगी, आजकल हम हाइब्रिड वॉरफेयर से, पहले हम कन्वेंशनल वॉरफेयर पे थे, अब हम एक हाइब्रिड वॉरफेयर से गुजर रहे हैं, सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ों की, और आइंदा आने वाले टाइम्स के अंदर हम जर्म वॉरफेयर से गुजरेंगे। और ये कोविड जो है ये इसके लिए बहुत बड़ी आई ओपन कर रहा है, और इसके लिए बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं कि अगर ऐसी वबा कोई आती है, जानबूझ के फैलाई जाती है, और उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़रूरी है। तो आपका ये प्रोग्राम है ये और लोगों को क्रिएट करेगा अवेयरनेस, इसके अंदर शामिल एक तो ना सिर्फ कि नेशनल स्पिरिट में, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है कि इसके अंदर आप कैसे बेहतरी ला सकते हैं, दुनिया को चेंज कर सकते हैं पॉजिटिवली। चीज़ भी ज़रूर बताइएगा, मिसाल के तौर पे अभी जैसे कोविड आया था, उसमें बहुत सारे लोग बताते नहीं थे कि उनके घर में कोविड है, वो छुपाते थे, उन्होंने हॉस्पिटल नहीं भिजवाना है। अब अगर ये जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम कहीं ना कहीं अप्रोच कर सकें, या कोई सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, ताकि ये आवाम के लिए है, ये लोगों के लिए है, तो इसको हम छुपा नहीं सकें। बिल्कुल कह रहे हैं, इसी वजह से जैसे मैंने बताया ना कि उसकी जो हमें वो जो भी हमने उसको जो ये जो डाटा डिटेक्ट किया कि कोविड किसका था, जब एनसीओसी को रिपोर्ट करते थे, उसकी वजह से बहुत ये फ़ायदा हुआ कि जो लॉकडाउन्स लगे वो माइक्रो लेवल पे लगे, पूरे शहर में बाद में बंद नहीं हो रहे थे, सिर्फ इलाके लॉकडाउन हो रहे थे। और इसमें थोड़ी सी हम सबकी अपनी जिम्मेदारी भी है। ये जो हम छुपाते हैं ना चीज़ें, ये भी बड़ी गलत है। एक चीज़ मैं ज़रूर बात को ख़त्म करते हुए वैक्सीनेशन के बारे में बोलूँगा। ये जो आवाम की आपने बात की ना,
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें इंसान को भी थोड़ा सा सीखना चाहिए। वो सीखना ही चाहिए कि आपको मैं बताऊं कि मैं तो इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट हूँ। मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि वैक्सीन लगाने से जहन तो महफूज नहीं हो जाएगा, आंखें तो अंधी नहीं हो जाएंगी, दिल की धड़कनें तो बंद नहीं हो जाएंगी, मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, डायबिटिक हूँ, मेरी बीमारी तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाएगी, जिगर तो नहीं फेल हो जाएगा। हमारे लोगों को यही परेशानी थी कि बच्चे पैदा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो ये जब कॉन्सेप्ट एजुकेशन से फैलेगा, और अगर हमने आज एजुकेशन नहीं ली और लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हुई, तो डेफिनेटली ह्यूमन फिर रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं और इसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग और अपनी को लेके आएँ। सर, एक आखिरी पैगाम हमारे यंगस्टर्स के लिए आपकी जानिब से जाएगा, क्योंकि डिस्कशन के बाद एक तो क्लियर हो गई कि कोई एक डिपार्टमेंट, कोई एक शुआ ऐसा नहीं है कि जहां पर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत ना पड़े। कोई भी सेक्टर अब ऐसा नहीं बचा है, और बल्कि हम इस इंटेलिजेंस के थ्रू हम अपने तमाम उन कामों को और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इसलिए जो हमारी नौजवान नस्ल आपको सुन रही है, उनके लिए आपका पैगाम, आपका कैमरा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त चाइना की एक मेजर पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आई है, इंडिया की एक मेजर पॉपुलेशन मिडिल क्लास आई है। आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। बहुत सारी और भी वजूहत हैं महंगाई की, मगर मेन वजह यह है कि राइज ऑफ द मिडिल क्लास इन एशिया। अच्छा, जो ये मिडिल क्लास उभर के आई है, इनके पास पैसे हैं, ये सॉफ्टवेयर से और हार्डवेयर से पैसा कमा रहे हैं। ये चाइना में बैठ के एक बंदा लाख $1.5 लाख कमा लेता है, जो कि पहले $200 पे था मिडिल क्लास में, अब वो अपर मिडिल क्लास का हो गया है। तो वो गोश्त भी खाएगा। अगर हमने अपने आप को इंटरनेशनल इकोनॉमी से नहीं जोड़ा और टेक्नोलॉजी इकोनॉमी से नहीं जोड़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमें खाना भी मसला हो जाएगा। और अभी भी आप देखें गोश्त कितना महंगा हो चुका है। ये जो महंगाई की एक वेव है, में वजह क्या है कि जो टेक्निकल लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो मार्केट से उठा रहे सामान, और हम और आप जो कि पुरानी तरीके से जिंदा रह रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उसकी कीमत में खरीद सकें। तो क्या होगा? हम भूखे मरेंगे, वो खाना खाएंगे। तो अगर हमने जिंदा बचना है आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, हमें अपने आप को सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, वेब3 और जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे सारा भलाई है। देखिए, दूध पीना अलग चीज़ है, और भलाई तो सारे अमेरिकन और दूसरे इंडस्ट्रियल जो मुल्क हैं वो खा जाएंगे, हमें वो दूध नहीं मिलेगा, हमें वो छाछ की दही की। तो अगर हमने अपने बच्चों को ट्रेन नहीं किया और अपने आप को ट्रेन नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात, सिर्फ ये बच्चों की नहीं है, ये जो उम्र के भी लोग हैं। मैं खुद 60 का हूँ, मैं तो हर रोज अपने आप को रीट्रेन करता हूँ, और मैं यकीन से कह सकता हूँ मेरे साथ दो जो मेहमान बैठे हुए हैं, ये दोनों भी अब रोजाना पढ़ के अपने आप को। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारी उम्र क्या है, जो ये उम्र है, अगर नए दौर में जिंदा रहना है तो नए तरीके से रहना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ज़ियाउल्लाह खान साहब, थैंक यू वेरी मच सर। आप हमारे आइडियाज 2022 शो के मेहमान बने, आप टीवी के मेहमान बने, आप बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई चीज़ अगर आप कोई पैगाम कंप्लीट या कुछ अगर कहना चाहते हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर जी। असल में देखें, ये हमारी आर्म फोर्सेस के लिए, मैंने पॉपुलर के लिए बात कर रहा था, हमारी आर्म फोर्सेस आप ये समझ रही है। देखिए, हमने एक वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट बनाया G17, जो 4.5 जनरेट करा है। जब पहली दफा बना, मेरे बहुत से स्टूडेंट भी उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में शामिल थे, तो मैं खुद भी हैरान हो गया जब मेरे उनसे बात थी कि माशाल्लाह मार्वल है। मगर अब नया दौर आया, आप 5th जनरेशन में तो हेल्थ और इस टाइप के, मगर 6th जनरेशन फाइटर बन रहे हैं। 6th जनरेशन फाइटर, 7th जनरेशन फाइटर में हमारे दुनिया के बेस्ट पायलट्स हैं, मगर बाय द टाइम 7th जनरेशन आएगी तो पायलट की जरूरत नहीं होगी। जो इस वक्त नए किस्म के जो 6th और 7th जनरेशन में, अभी वो एक्जैक्टली डिफाइन नहीं हुआ हुआ, मगर 6th और 7th जनरेशन जो फाइटर होंगे वो रोबोट्स होंगे, वो ड्रोन्स होंगे, और वो ड्रोन्स की फाइट होगी। क्योंकि जैसे पायलट है वो 9 से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका, ड्रोन तो 16 GB बर्दाश्त कर लेगा जब टर्न होगा। तो हमें ये हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर हमें जिंदा रहना है तो पॉपुलेशन के लिए तो मैंने बता दिया, आर्म फोर्सेस को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी, क्योंकि आजकल जहाज J-17 और F-16 में कोई मेजर फर्क नहीं है, मगर जो F-35 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर, दैट इज द की। तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच ज़ियाउल्लाह खान साहब, थैंक यू वेरी मच मुज़िल अख्तर साहब, थैंक यू वेरी मच फरहानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्लीज़ इस वक्त जिस तरह फरहान भाई ने फरमाया कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, और ये मैंने कल भी जब मैंने इंटरव्यू दिया तो इसके ऊपर मैंने एम्फेसिस किया, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी आर्म फोर्सेस
जो पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती हैं, अपने नज़्म ज़ब्त के एतबार से, अपनी कंट्रोलिंग के एतबार से, अपने काम के एतबार से। तो कोई भी काम जिस तरह हर चीज़ के अंदर किसी एक चीज़ के बारे में एक्सपर्टीज़ होती है किसी भी शख्स के अंदर, इसी तरह से हमारी आर्म फोर्सेस की ये कैपेबिलिटीज़ हैं। इसके साथ साथ हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जिस तरीके से ज़िया खान साहब जैसी शख्सियात हमारे पास मौजूद हैं, हम चाहते ये हैं कि आर्म फोर्सेस इसके अंदर कदम आगे बढ़ाएं। अगर वो J-17 थंडर तैयारा पाकिस्तान अंदर बना सकते हैं, सुपर मशक तैयारे पाकिस्तान बना सकते हैं, जो इस वक्त हम बेशुमार मुल्कों को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई वजह नहीं कि वो एक पूरी जनरेशन को डेवलप करें जो मेटावर्स, पाइथन लैंग्वेज और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हो। तो इसके लिए काम ये करना पड़ेगा कि आर्म फोर्सेस के साथ प्राइवेट सेक्टर्स को और ज़िया खान साहब जैसी शख्सियात को आगे बढ़ के, सैलानी जैसे इदारों को, JDC जैसे इदारों को, AD जैसे इदारों को आगे बढ़ के इनके साथ काम करना होगा, ब्रिज करना होगा, और इसके लिए एक पूरा लाहे-अमल तैयार करना होगा जिसकी बुनियाद है अगले 2 से 3 साल के अंदर हम एक बड़ी तादाद के अंदर IT एक्सपर्ट्स को पैदा कर सकें, और पाकिस्तान को IT की फील्ड के अंदर, जो हम इस वक्त इंडिया से हम कह रहे हैं या फिलीपींस से कह रहे हैं बहुत पीछे हैं, हमें इसके अंदर आगे जाना होगा। लेकिन उसके लिए कोर रिसोर्स जो है, मैं समझता हूँ कि नज़्म ज़ब्त के एतबार से, कंट्रोलिंग के एतबार से, सिस्टम के एतबार से हमारी आर्म फोर्सेस को इसके अंदर अपना रोल प्ले करना होगा। रोल उनका हो सकता है। फरहान भाई, आपका भी एक पैगाम जी। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ ये, आपने यूथ की बात की थी, तो मैं यूथ से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी सी जो हमारी जनरेशन आई है ना, जी जनरेशन, ये थोड़ी, हम लोग सोचते हैं कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि मेरा क्या फ़ायदा है, कुछ करने में मेरा क्या फ़ायदा है। मैं उनसे सबसे गुजारिश करूँगा कि हम सब ने दुनिया ट्रैवल की है और बहुत दुनिया देखी है और रह भी हैं। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से अच्छा पूरी दुनिया में नहीं। आजकल ये जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है, ये सारी एक्सपोर्ट कर सकती है। अपने मुल्क से एक्सपोर्ट करें। आप यहाँ पे लोगों को जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बने और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें और पाकिस्तान को स्ट्रेंथन दें। और अगर आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे तो यहाँ के जितने बच्चे हैं, अगर कोई बाहर भी जाता है या सॉफ्टवेयर के लिए जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। ऐसी चीज़ बनाए कि जो वर्ड्स आपके हैं, जो आप किसी से कमिट करें उसको पूरा करें। बल्कि मैं गुजारिश करूँगा, अंडर कमिट ओवर डिलीवर और पाकिस्तान फर्स्ट। Thank you very much, Farhan Issa साहब, Muzammil Atar साहब, and thank you very much, Ziaullah Khan साहब. It's an honor to chat with you. और आपके जो पैगाम हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये हमारे तीनों एक्सपर्ट्स को आपने सुन लिया होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस आइडियाज़ 2022 का अगर मैं ये कहूँ कि चंद बड़े मकासद में से एक मकसद है, तो ये बेजा ना होगा। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं दिखाई देती। जो ज़ियाउल्लाह खान साहब ने एक जुमला कह दिया, अगर हमने अपने आप को, अपने इदारों को और अपनी तमाम वो चीज़ें जो हमें ज़िंदा रखने में मददगार साबित होती हैं उनको ज़िंदा है, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ख़ास फोकस हमें ज़रूर देना होगा और हम सबको देना होगा। किसी एक सेक्टर के लिए ज़रूरी नहीं है, शोबे की ये बुनियादी ज़रूरत दिखाई दे रही है। और आने वाले वक्त में अगर इसका सहारा नहीं हुआ तो फिर शायद हम सब बेसहारा हो जाएंगे। यहाँ राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इस आइडियाज़ 2022 के स्टूडियो से इजाज़त चाहते हैं। मज़ीद गेस्ट आते रहेंगे, उससे गुफ्तगू होती रहेगी। जल्द मिल रहे हैं, जल्द आए, अल्लाह ने के बाद। My name is Haider Mahbub Hussain and I am the founding editor of Defense Guardian International. We are the media partners of Ideas 22 and we are launching, which is Pakistan's first international defense magazine. As well as we are giving all sorts of media solutions which is related to the defense industry. And I hope you're all having a good time in Ideas and we look forward to see you at our stall in hall number 5. Thank you much. Well, hello. My name is Ayhan Şentürk, and I am the Business Development Manager for Profen Defense Technologies. We're a Turkish company. Our company was founded back in 1995, and our core expertise and experience is in satellite communication systems.
So that's satellite antennas, satellite ground stations. And those are the main products that we're promoting at this exhibition. So we can design and build all the way from 65 centimeters, small satellite dishes, man-pack terminals, all the way up to 7.3 meter big ground stations. So as I said, that's our main expertise. That's where our main experience comes from. But we're also an engineering company. We do systems integration. We have a very good software team supporting us in our activities. We have a materials science team helping us with the design of our antennas. And we deliver turnkey solutions to our customers. It's our first time in Pakistan attending an exhibition, and it's been a very fruitful period for us. I mean, we've been very busy for the past 2 days. We're busy today as well, and we're very happy about it. We're very happy about it. During the COVID period, we've been having a lot of online meetings or telephone meetings with our contacts in Pakistan. So as I said, it's our first time in Pakistan, and it's a great pleasure. It's a great pleasure to be able to talk, face to face with our contacts, with our customers in Pakistan. So thank you very much. Thank you very much for everything, for your hospitality. It's been an honor to be here, and we look forward to improving our relationship with Pakistan. Thank you. जी हमारा डीमार्ट ईरानी कॉन्फेक्शनरी ग्रोसरी स्टोर है, बेसिकली लोकेटेड सोल्जर बाजार से है। यहाँ एक्सपो के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने स्वागत किया। हमारे पास यहाँ नूडल्स, जूसेस, बिस्किट्स, ऑयल, लॉन्ड्री लिक्विड, डिश वॉश, हैंड वॉश, इस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ सोनर वगैरह मौजूद हैं। तो ये अच्छा है कि इस तरह के जो है वो इवेंट्स होने चाहिए कराची के अंदर, खुसूसन आजकल जो It's 3 p.m. Assalamu alaikum. My name is Haider Mahboob Hussain, and I am the founding editor of Defense Guardian International. We are the media partners of Ideas 2022, and we are launching, which is Pakistan's first international defense magazine. As well as we are giving all sorts of media solutions, which is related to the defense industry. And I hope you're all having a good time in Ideas, and we look forward to see you at our stall in hall number 5. Thank you very much. IT20 brings together stakeholders across diverse defense industries. The voyage offers a platform for G2G, B2G, and E2 merchants, joint ventures, and investments in the production sector. A seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The edition of it will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center.
Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures, and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEA will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Park Global is basically running a buying house. We are facilitating with the different countries' buyers with Pakistan industries, and we are giving a one-window support so that the visitors don't have to visit again and again the same stall or the same product. We facilitate them, and with shorter time we make the arrangements. And recently we make 2-3 deals with the Jordan government and Zimbabwe and Nigeria, and by the grace of Allah we are very successfully running this Park Global Supply Solution. In Pakistan, depot is presenting very good opportunity to all our potential buyers, and for the Pakistan industry like small arms and textile industry, it is a big opportunity to produce the items world standards. And for the depot and Badar Expo, I am very thankful they have provided us this opportunity for the international buyer. We are linking with them. Thank you very much all. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर एलिया है। मैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर को हेड करता हूं। आज हम एक BIC की प्रोडक्ट जो कि हमारे वर्दी वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान साहब का आइडिया था, जिसको हमने अमली जामा पहनाया है हमारे इंक्यूबेशन सेंटर ने, और हमने एक ध्यान के नाम से एक बॉट बनाया है जो कि घर में बच्चों का ध्यान रखेगा, उनके साथ इंटरेक्टिव सेशन करेगा। ये AI बेस होगा और इसके अलावा स्टोरीज सुनाएगा, उनके साथ इंटरेक्शन रखेगा, रिप्लाई करेगा और बहुत सा और टीचिंग में भी मदद देगा। शुरू में हमने ये प्रोडक्ट सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन अभी 7 मंथ में हमने ये प्रोडक्ट कंप्लीट किया है। तो अभी ये ब्रिगेडियर रफ़ीक साहब जो कि नेवल कमांडर भी हैं यहाँ कराची में, तो हम इनके अल-शाह हॉस्पिटल में भी इसको इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम असद कमाल है। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस। GIDC पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड कंग्लोमरेट है, कंपनी है। हम आइडियाज़ का 2007 से पार्ट हैं और मैं ज़ाती तौर पे तो सन 2000 से आइडियाज़ को देख रहा हूँ। जब इसके शुरू में 3 हॉल हुआ करते थे, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जिबिटर्स व्हेन आइडियाज़ स्टार्टेड। आई हैव हैड द ऑनर के मैंने इसको देखा है ग्रो करते हुए। 2022 है, अब माशाल्लाह 9 हॉल्स हैं इसके। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मोमेंटस ओकेजन है 2022 में, क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और आज बहुत सारे इंटरनेशनल विजिटर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं जो इस पूरे इवेंट का पार्ट बन चुके हैं। हमारे अपनी स्टैंड पे मेरा 50 से ज़्यादा डेलीगेशंस को मैंने रिसीव की हैं, और इससे भी ज़्यादा आई एम श्योर इन्वाइटेड होंगी।
और जो एग्जिबिटिंग कंपनीज हैं 9 हॉल्स अगर हैं तो दैट मीन्स कि एग्जिबिटिंग कंपनीज जो पाकिस्तान में हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लोकल और फॉरेन, बहुत सारे और मुल्कों का इंटरेस्ट भी है इसमें। मैं देखती हूँ कि जो डिफेंस एग्जीबिशंस होते हैं दे फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान ये एक बहुत आइडियल प्लेटफॉर्म आपको देते हैं जहाँ पे आप डिफेंस कैपेबिलिटीज हर 2 साल बाद दुनिया के आगे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस है क्या, और आपको एक मौका मिलता है दुनिया से नेटवर्किंग करने का, बाहर की दुनिया को मौका मिलता है कि वो आसपास अपनी चीज़ों को रह सके। आई विश डेपो एंड बदर एक्सपो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, और मैं होप करता हूँ कि अंडर देयर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट they can take this platform and exhibition to new heights. So good luck to both of them. Thank you very much. Pakistan Zindabad. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आतिफ कटाना है और मैं जीएम कॉर्पोरेट सेल हूँ सर्विस इंडस्ट्रीज में। सर्विस इंडस्ट्री पाकिस्तान में 50 साल पुराना नाम टायर के हवाले से और शूज़ के हवाले से पहचाना जाता है। हम लोगों के लिए जो जूते बना रहे हैं उनके अलावा हम लोग फोर्सेस के लिए जूते बना रहे हैं जो कि कंप्लीट रेंज है नेवी के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, रेंजर्स के लिए और पुलिस के लिए। इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में कुछ और चीज़ें बना रही है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग आर्मी के लिए चीन में जो शूज़ इस्तेमाल किया जाता है के शूज़ वो भी बना रहे हैं। इसके अलावा गैस आर्मी के लिए बना रहे हैं जो पाकिस्तान में सिंगल सोर्स है आर्मी के लिए। इसके अलावा हम लोग अल-खालिद और अल-ज़रार के लिए रबर पार्ट्स भी बना रहे हैं। रिसेंटली हमारा एक जेवी हुआ है चाइना की एक कंपनी लॉन्ग मार्च के साथ, और पाकिस्तान में पहली दफा ट्रक बस रेडियल के जो टायर मुतारफ आए गए हैं वो भी इस ग्रुप की तरफ से करवाए गए सर्विस लॉन्ग मार्च के से। इससे पहले ये सारे टायर पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते हैं। पाकिस्तान में मार्केट साइज ट्रक बस रेडियल का तकरीबन 2 मिलियन के करीब है एक साल में, और हम जो प्लान करके इस पाकिस्तान में ये फैसिलिटी लेके आए हैं, हम इंशाल्लाह थर्ड फेज में आज 2 या 3 साल बाद 2.4 मिलियन की कैपेसिटी एक साल की बना रहे होंगे। और मार्च में ये इनॉग्रेट हुआ है और इस वक्त हम लोग अमेरिका को ये टायर पाकिस्तान से बना के करें, जो कि पाकिस्तान के लिए एक फख्र की बात। आइडियाज़ के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पे बहुत से ममालिक से लोग आते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है और दुनिया को ये जानने में आसानी होती है कि पाकिस्तान भी बहुत सी चीज़ें अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नो डाउट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट के लिए। I'll start with extending my thanks, and I would also like to say Assalamu Alaikum to all the dignitaries, members of this, our chief guest, Vice Admiral Shahid Karimul Saab, Vice Admiral Ahmed Saeed Saab, and members of the business community, all others spread over here. Assalamu Alaikum, and thank you for granting me the chance today. I will be talking about the challenges of our shipping industry from a private sector perspective and how that relates to other stakeholders. The area of focus of this presentation is the energy supply chain. And the reason why I have chosen this topic is because I truly believe that energy is the biggest security factor for any country, especially a country like Pakistan that is heavily dominant on and reliant on energy that is being imported. Our energy comes from crude oil, from LNG, from coal. We have indigenous local sources that we are developing, and I hope that goes on and becomes a good percentage of our energy mix. But as of today, we are a nation that imports the bulk of its energy and is reliant on imports. And that import is done through the shipping routes, through the shipping supply chain. And if we resolve those inefficiencies, some of the inefficiencies, and we are also able to capitalize on our existing shipping infrastructure, on its utilization, we can make our energy mix and our energy supply chain much better, and we can be operationally and economically efficient in managing our energy. As you already know, energy impacts all of us, from the gas in our cooking stoves, to the petrol in our car, to the gas and other sources of energy that we need to run our industries, to run our navy fleet, to run our jets, and so on and so forth. So it is a very important factor for any nation. That is the reason why I have chosen this topic.
I will be giving a few examples that will show us two sides of a coin about how we are, it will show us why we are inefficient in some ways, and how, on the flip side, by taking some small measures, we can become much better and much more efficient. So, first of all, I would like to just present the impact of inefficient energy supply chain, or the impact of high energy costs, let's say. So, there are three components to the energy supply chain, broadly speaking. One is the product. The product is important, its price is driven by international markets. That is not something that is in our control. The second are shipping costs, which is something we can control, because a lot of our energy can be transported to the Pakistan National Shipping Company and its fleet, and we can manage our shipping costs in that way. I'll come and address that point later in the presentation. Third part is the supply chain, the berths, the storages, the discharging methods, the pipelines, the connectivities. These three make up the energy supply chain, broadly speaking. So high energy bill translates into inflation, into a current account deficit, where we face devaluation, where we face inflation because of the devaluation, and that leads us to a certain sort of debt crisis every now and then, and also encourages hoarding, because there is an imminent or shortage of commodities and energy products, and that leads to a certain sector which hoards the current inventories and aggravates the situation rather than helps it. So if I talk about the oil import, I'll be focusing on two products in my presentations. I don't want to bore you too much on this Sunday morning, so I will try and keep it simple and not too dry. So I've chosen oil, and I've chosen to speak about coal, to give you an insight and a holistic view about what can be done. So if we talk about oil imports, we have two ports mainly that cater to our oil imports: crude oil, furnace oil, petrol, diesel. All of this comes through Port Qasim and Karachi Port. I'll talk about Karachi Port. Karachi Port has a number of berths. We have OP1, OP2, D1, DB2. They all discharge chemical, petrochemical, oil cargoes. So we have multiple berths over there. And most of the time, we'll find that there are idle berths at KPT for discharging oil and related products. However, the storages in KPT are slightly inefficient. They haven't been developed. Infrastructure, the pipeline connectivities has not been done over the last 10 to 15 years. Now, in contrast, if I talk about Port Qasim has very efficient storages. It is linked all the way from pipeline up to Punjab. It has multiple storages. It has good mix of storages, but it only has one berth to discharge all cargoes. So you see how KPT has inefficient storage, but multiple berths, but Port Qasim has one berth and multiple storages. So the problem and the solution are sort of the same, in the sense that if we connect the both ports, if there was some sort of connectivity between both the ports, they could benefit of that synergy. They could benefit of that. Port Qasim does not need to make more storages, and KPT does not need to make more berths. A collaboration, a synergy, a little bit of discussions between both the ports will resolve the problem. So without spending much, we will be able to capitalize and increase the capacity utilization of the existing infrastructure. So that is a little example of how we can go about it. Just to give you a little bit more insight, there are vessels that call on Port Qasim. There's empty storages at Port Qasim available, but due to just one berth discharging one vessel at a time, we have up to 5 to 10 vessels waiting for the berth, incurring damages, sometimes to the tune of $100,000 vessels, sometimes higher. You back up onto 10 vessels, that's $1 million. And obviously for a country that is working on its foreign exchange reserve, such situation can be avoided, should be avoided. And there is another port which is not too far away from Port Qasim that has multiple berths. All we need to do is connect them both, so we can discharge 4, 5, 6 vessels at one time. We can store our energy, we can be more efficient. Talk about coal a little bit. We are developing third coal, and I think that is a very good initiative. That is something that should go on. It should become a bigger percentage of the overall coal mix. That will help us not be reliant on imported coal, something we should all prefer. However, the reality as of today is that in 2021, Pakistan imported 16 million tons of coal through seaborne routes. And it is expected that with the added power plant capacity and the expansion of the cement sector, this will go up to 25 million tons over the next 2 years. 60 million tons translate to 290 vessels per annum, approximately. That's 24 vessels per month. And during proceedings of the Supreme Court in 2018,
there was a decision was made where all coal imports were destined towards Port Qasim to a single purpose custom built terminal, which is fine. However, that terminal also has one berth. It can only discharge one vessel at a time. The time that that terminal was being built, Pakistan imported less than 1 million tons a year. Now we import 16 million tons a year. The capacity is not enough. The vessels, they wait outside during high traffic season, and they incur, again, damages up to $100,000 and $150,000 per annum, per vessel per day, I'm sorry. And that increases our import bill. And at the same time, another port, KPT, which is an hour away from Port Qasim, has idle berths lying there that can discharge coal, or a purpose-built terminal can also be developed at KPT, or some kind of railway connectivity can be done so that the discharging from the vessel onto the land and forward onto the factories is much more efficient. And we don't pay extra dollars for our energy. So if I was to sum up the gaps, if you realize both the topics that I talked about, KPT, Port Qasim, crude oil, coal, we aren't talking about any new projects that we need to do. The idea that I'm trying to float over here, I'm trying to give a dissected bird's eye view that we have the capacity within the realm. We just need to have a smarter approach. There is a concept of smart hub or smart port, which basically talks about how ports can talk to each other, how they can share data on one dashboard, and they use that data to deploy their capital in a much more efficient manner. So in efficient capital deployment, where one port has an existing capacity which is idle, and the other port is spending more money to build the same storage facility or the same discharging facility, is inefficient capital deployment. A little bit of synergy that we can build between both the ports, between the authorities, that will help them deploy the capital in a better way and also make themselves much more efficient by building those synergies between themselves. Another initiative or another drive that we need to focus on is the impact of PNSC, the Pakistan National Shipping Corporation. The Pakistan National Shipping Corporation is a hidden gem that we must focus on. It is the only company in Pakistan that charges its freight in PKR. We don't have any other. If we want to pay for our shipping costs in Pak rupees, we don't have any other option except PNSC. So PNSC should be supported to increase its fleet so that it can cater to maximum energy import. Its focus is already on oil and crude oil imports that come into Pakistan. It should increase its fleet. We are trying to increase its fleet. We are talking about how PNSC should be allowed to procure second-hand vessels. It should be exempt from PEPRA rules so that it is able to increase its fleet, and we don't have to pay for our shipping costs in dollars. We pay for them in PKR. In fact, if we build excess capacity of PNSC fleet, PNSC will not only be able to reduce our shipping bill, it will be able to bring in foreign exchange by selling its freight and vessels to the foreign market. Also, if we are efficient and we build these synergies between our ports, we would also be able to benefit from low commodity prices. We all must remember when COVID hit, oil went down to $20, coal went down to $40. China and other countries in the region who had efficient energy supply chains, they bought commodities at very low prices, they stored them, and they benefited off them when prices were high. We've seen this same issue with us in LNG. When the prices are very high, we are unable to purchase them, and that leads to a gas crisis. So that is another thing that we need to focus on. The government's part, obviously, a little bit of activism, a little bit of synergy, sharing data, flow of information. I think platforms like NEMA are a great platform where all of these authorities, stakeholders can get together, share their views, help give a holistic view, a bird's eye view, rather than working in small bits. We can share our information, we can share data, and we can help spend less and become much more efficient. Also, incentivizing the private sector, and in the private sector or
I would always say that we should support local companies. PNSC is a great example of how a local company is benefiting us for the same services that we could have taken from international companies. That does not mean that we should discourage international investment or JVs, but local companies should be incentivized to build railway routes, shipping routes, terminals, ports, and multiple of those facilities, so that there is more competitiveness, and less monopolization, and the market should become more efficient automatically once there is more competition. So that would be all for me, and thank you very much for your time. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures, and investments in defense production sector. A speak seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamu alaikum. My name is Ahmad Askari. I am business head of dynamic engineering automation. You can see मेरे पीछे आप ये कंपनी देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे we are a company जो हम alternate gas solution देते हैं पाकिस्तान में. आपको पता है आजकल के जो गैस है वो पाकिस्तान में नापैद हो रही है. उसी को सामने रखते हुए हम पिछले कोई 10 साल से उनके साथ 11 साल हो गए हम ऑल्टरनेट गैस सोल्यूशन दे रहे हैं जो कि एनर्जी नेशनल गैस को रिप्लेस करते हैं. एलपीजी बेस्ड सिस्टम होते हैं. अब तक हम कोई तकरीबन 60 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल इदारों में और तकरीबन 10 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ में ये गैस का सोल्यूशन दे चुके हैं. जहाँ पर सुई गैस नहीं होती है वहाँ पर हम एलपीजी बेस्ड एसएनजी सिस्टम देते हैं जो कि बिल्कुल उसी तरह से गैस पाइपलाइन में ट्रैवल करती है जिस तरह की नेशनल गैस ट्रैवल करती है. और वैसा ही एक मीटरिंग सिस्टम लगा होता है और इसी बिल्कुल सेम बिलिंग होती है. इसमें से अब तक 8 प्रोजेक्ट हम SSDC के प्लेटफॉर्म से लगा चुके हैं और 2 प्रोजेक्ट अभी हमारे जो लग रहे हैं वो SNG पे लग रहे हैं. सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा SNG पे लगा रही है गिलगित के लिए. पूरे गिलगित शहर पे हम ये SNG का सोल्यूशन दे रहे हैं. और अभी रिसेंटली कराची में हमने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है 8000 घरों के लिए वो बैरियर टाउन में है जहाँ पर बैरियर टाउन के तमाम घरों को गैस पाइपलाइन के जरिए गैस मिलेगी और मीटर से जरिए तो उनको बिलिंग की जाएगी. वो बैरियर टाउन का अपना प्राइवेट प्रोजेक्ट है और जो गिलगित का प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है. आइडियाज़ में भी मसला इंटरनेशनल एग्जीबिशन वहाँ पर भी हम शिरकत करते हैं. से बैठ के हम UAE में और अफ्रीका में भी काम कर रहे हैं. So my piece today will be about artificial intelligence and its evolution, defense market. If we can please have the slides. So in the meantime, while slides are displayed, I could probably engage that you might have heard the word Industry 4.0. And the manufacturing industry, for example, or in the broad sense, the sense the world works is actually divided in 4, paradigms or 4 periods in which science has prevailed in ways. So the most recent one, the Industry 4.0 era, actually it comes after the Industry 3.0 era of robotics. And this one, the current era, which is post 2015, is more about integration of artificial intelligence with all sorts of devices. We keep hearing stuff like Internet of Things, for instance, or big data, for example. We keep hearing about cybersecurity. We keep hearing about so many other areas. And basically, at the back of all this, without artificial intelligence, nothing would actually work. Because what do we do with all the data that we collect with IoT, for instance? If there is no AI behind it to actually process the data and take any intelligent decisions, then what's the use of having all that data? Similarly, there are proven examples of, for instance, in medical science, there's research back even in the 90s. This is before the invention of deep learning, for example, that with the normal machine learning, a lot of complex medical problems were actually solved. The third aspect is that artificial intelligence in the current world, in the world of today, is perceived as, most of the applications of AI that we see are in the area of perception. That, for example, we have some data, we're trying to make sense of that data, and we're extracting some information and, presenting it in a, a way that is useful for humans to actually process or make decisions. The actual manifestation of artificial intelligence is in the form of real life agents and real life things which actually implement AI in the real world.
And that is like most obvious when it comes to defense products. For example, we all know about the Loyal Wingman project, for example, for the Air Force, which the US Air Force has. That, for instance, you know that they have already succeeded in flying an F-16 autonomously, right? So the Loyal Wingman project focuses on, a wingman flying with a real pilot, and the plane being totally pilotless. And a lot of the decisions to be taken by the lawyermen basically depend upon the data, but they're real-time decisions which have elements of all sorts. The implementation of AI can come from search-based algorithms, it can come from logic-based algorithms, and some aspects of it can come from the machine learning algorithms as well. So AI has a lot of paradigms, and one basically needs to know which paradigm to apply, what sort of a problem, in what way. For this reason, what usually is said is that AI is as good as the mind behind AI that actually writes the program, right? So the more the comprehensive the data is, and the better the mind that is actually writing the artificial intelligence code, that actually, gives us a manifestation of how good an algorithm of artificial intelligence will come out. So taking the privilege of the slides being late and my being able to talk to you freely, I can, tell you a little bit about the AI seminar, which has been a big effort with C4I and with Depot, and it's had several legs. So it has two components. One component is today, another component is tomorrow. So the first component, which is today, is with 4 keynote speakers, 2 of them foreigners who have actually made time to come to Pakistan, and also Dr. Jawad Shamsi is a very prominent speaker from Pakistan side. So it's a privilege for me also to speak here. And tomorrow we're going to have presentation from, it's a competition-like format in which papers and projects, ideas have been invited from all over Pakistan, and people have competed against the project. So it's 143 submissions. From there we came down to 70 after evaluations. After 70, the next stage of evaluation, we went down to 16. And after 16, we have the top 6 basically projects and papers which are going to be presented here. So great effort done by Depot and C4I with some input from the National Center of Artificial Intelligence. And it's good to see that AI, the importance of AI is finally being felt in Pakistan. I always say that in every department in Pakistan, we need at least a think tank which thinks about applications, or you could say technologies which are useful, in the form of including emerging technologies. At the back, automatically there will be artificial intelligence, and there will be a lot of instrumentations and sensors, etc., which will be integrated in different departments as well. AI is, by the way, not a new area. AI has been around for a long time. I think since there are successful examples of artificial intelligence being applied even as old as the Second World War. And the reason why AI has become more significant right now is the advent of a lot of the computational resources as well. And you could see that there is a lot of new resources are evolving, and the defense technologies are becoming more and more advanced with artificial intelligence now, incorporated in them. So now that we have the slides, let me finally begin with them. So formally, the topic of my presentation today is the evolution of artificial intelligence technologies in defense, the overview of the market, dynamics, and trend analysis. Next, please. Next slide, please. Okay, so a little bit about myself. So I've been passionate about computers and about programming since my early school years. Actually, I started my programming, I think I was in the 5th grade when I started writing programs. And my first attempt at writing a research paper was in the 9th grade in school. So I've been teaching the AI and robotics at NUST. Actually, I founded the Department of AI and Robotics back in 2009 at NUST after my PhD from Japan. And this is the oldest program in artificial intelligence and robotics that exists in Pakistan with this title as well. And right now, I'm the chairman of the National Center of Artificial Intelligence. Next, please. So this is a glimpse of some of the research which predates NCI that I've done. So just to give you an idea which background I'm coming from. So I'm really fond of putting artificial intelligence into real life systems and into machines that actually interact with the real world. For example, the robots that you see on your left and my right, these are the humanoid robots playing soccer completely autonomously. So this is one of my famous projects that was covered in the media a lot. And this was about 6 robots on one side, 6 robots on the other side. And they're completely playing with each other autonomously without any human intervention, without even connecting to an external computer, with
pre-trained algorithm which we actually train and we feed inside the robot, and they work by themselves to realize where the other robots are, where the goal is, where the ball is, and independently make strategy to actually score a goal and to also defend their own goals. There are technologies for rehabilitation which we have made for Sakura wheelchairs of Japan, and there are other projects, for example this prosthetic hand project which we have worked with AFRM, and this one has tactile sensation which actually gives back feedback to the humans, and actually on two of these, like the soft grasping and the hand projects, we won best paper awards in London and Sydney as well. So the prosthetic leg you see, this is also AFIRM actually. So this is an adaptive leg which actually adapts to the walking speed of the person. So a lot of other projects like that. This is just a glimpse of the sort of projects that we do. Next please. So the organization I'm currently leading is the National Center of Artificial Intelligence. This is a competitive grant awarded through the Higher Education Commission of Pakistan. And it's like in 2016, the government of Pakistan issued a call to all the Pakistani universities, all the professors, that everybody, whatever they're doing in artificial intelligence, they come forth. And looking at their research, looking at the background of their work, they awarded funding to 9 labs across Pakistan. I was very fortunate to be one of them. And then again, through competition, select which one person should lead the whole center. So right now, like I'm leading the center as the National Center of Artificial Intelligence. 9 labs are there, and we've also awarded 12 research-funded projects in different domains of artificial intelligence. So we are very applied. We actually implement AI, and a lot of it is deployed in the real world as well. Next, please. So coming to artificial intelligence and its significance, we see that the financial impact of artificial intelligence, this saying from Forbes is actually very insightful, that it is forecasted to add $15.7 trillion to the global GDP by the year 2030. The main reason is that this technology is general purpose. And it has applications that span industries like healthcare, like transportation, like financial services, energy, and so on. Some consider AI to be on par with what we saw with the evolution of electricity in the 20th century. So this is the reason why everybody keeps saying that AI is so significant. Some say that AI is as significant as electricity. Some say that AI is the most important invention that human beings have ever worked on. So another saying, for example, that whoever leads in AI will rule the world. So all this buzz around artificial intelligence, what's so special about it, and why is this the case? And then how does this apply to defense? Next, please. So let me share with you a small quote that I actually extracted from one of the letters which 3,000 researchers from around the world actually signed and sent to the UN. So this is like the quote reads that autonomous weapons which threaten to usher in the third revolution in warfare after gunpowder and nuclear arms will permit armed conflict to be fought at a scale greater than ever and at time scales faster than humans can comprehend. So this is the perception about AI right now, particularly focusing on defense, right? That the scale of war and also the speed of the war will go behind, completely beyond the way that we've been fighting wars before. And with completely autonomous systems, we've all seen how the Iron Dome has worked in the recent conflict between Israel and its neighbor, like the Hamas as well, the Palestine. And we've seen how artificial intelligence-based systems are real-world systems applied in real life right now. There are others, for example, we've got the Loyal Wingman project, autonomously flying plane, for instance. We've got Valkyrie. We've got so many other land systems. I didn't show any pictures of naval systems here, but there are autonomous ships as well. There are submerged vehicles too. So there are helicopters. This one, for example, this is like a Black Hawk helicopter. So this is the project Alias. Also, there are like land machines also. This Mars project, for instance, this Black Hermit, for example. So all of these projects actually are autonomous agents that work in the warfare strategy, and they actually also not at just this level, also at the tactical level. I'll come back to that in the next slides. So at the tactical level also, that all these things integrate together, and there's a tactical framework as well with which you can actually, using the AI governance framework, you can actually apply artificial intelligence towards the strategy of the war as well. Next, please. So there are, of course, drones are one example in which artificial intelligence has been applied extensively. And there are so many examples of drones, like, of course, several of them are teleoperated. But the real manifestation of drone technology is when the planes actually fly autonomously, right? So this is one of the applications areas of artificial intelligence as well. These are some of the AI-powered drones. Next, please. So artificial intelligence applies to various segments. Like I've shown you some of the machines that work autonomously within the battlefield. But AI goes well beyond that, actually, some of which you will see as examples in the papers being presented tomorrow as well.
So there are, for example, mission-specific battlefield robots. Some of the pictures I've shown you. There are unmanned aircrafts. There's a formulation of the governance of artificial intelligence, AI-based governance framework, and tactical design systems. So there are unmanned vehicles and weapons with hybrid remote operation capability. There is unmanned tanks and UGVs. There are like multi-aircraft coordination and control technology. Then there's autonomous underwater surveillance systems, and of course the marine surveillance systems in general, and autonomous land opticals and mine detectors. So this is just like some of the aspects of artificial intelligence. Actually, AI extends well beyond that. For example, one of the projects that we are doing, not directly for defense right now, it's mostly for the civilian maritime sectors, is focusing on how, for example, humans are dealing with so many new technologies and why some of the accidents that are taking place with all these automated machines are because of human error, and how we can improve on that using artificial intelligence, right? So AI extends much beyond, the core areas in which there are applications. Next, please. So if we look at statistics, if you look at numbers, right, because there are some analytics involved as well, the market share in defense, particularly for the defense AI market, because this is the depot, this is defense export promotion. So if you look at that, the market is expected to grow at an compound annual growth rate of 3.4% annually. So this is according to the Emergent. And this is actually the software market. If you look at the hardware market of artificial intelligence, because AI requires, computational capabilities to be developed at the same time as well. And now for a lot of, this is probably one of the major applications other than the mobile phone industry, where a lot of hardware is being designed looking at what sort of software is going to be deployed on this hardware to efficiently run that. So the hardware industry, there's another 13.6% growth, the compound annual growth rate, CAGR, expected for hardware industry itself. So if you look at, for example, the global market share, so it's like 28.8% of global market revenue was accounted for that in the Asia Pacific region. But there is, so far, the development of AI is fragmented. It's not in just one place. And actually, Forbes did a very famous article in January 2019 in which they compared the American capability with the Chinese capability and assessed which thing is better where, right? Particularly for like artificial intelligence technologies. So hardware and software both. So, next please. There are other statistics as well. For example, in case of the global newswire, they say that the growth rate is not going to be 3.4%. Their assessment is 12.9%. There are other studies which I did not include in this presentation, but North America, for example, or certain regions, the growth rate in artificial intelligence actually exceeds 30%, right? So it's like really huge growth. Wherever people are coming, applying artificial intelligence to the industry, so huge growth rates are expected there. So this is what I was talking about, that apart from the development of autonomous and intelligent weapon systems, it is like the efficient information, you could say, retrieval, the deployment of sensors and the information which is coming, back to you, the raw intelligence which comes from the real world data, and also the automation of multi-sense data fusion and intelligent sensing techniques to leverage better situational awareness. And once you have that situational awareness, then you can get to the tactical level, right? So cloud-based integration of land, airborne, and naval assets into a battlefield management system to leverage tactical capabilities. So this is, also something which is being worked on by artificial intelligence, like developers who are developing systems based on AI. Next, please. So the way AI works actually is that we have at the bottom level, like PF Syntaik will relate to it very much, that the way that this AI works is that at the bottom level there is infrastructure, of course. So like this is the hardware as well as the core software infrastructure in which, for example, you need a lot of data to be fed to artificial intelligence through a lot of sensor networks. You require, this can be mobile, this can be cloud, this can be Internet of Things, the things I was talking about right in the beginning of my talk. Then on top of it, you've got cognitive systems. And then on top of it, you've got applications. So the good thing is that a lot of applications which are, like for example, application areas that may be particular to defense, don't need generation of entirely different kind of algorithms. Like for example, if something has been worked on in the civilian domain, it's also very much applicable to the military domain as well. So for example, if you want to do object recognition or you want to do any activity recognition, for instance, the algorithm behind that activity recognition will be the same, even though it is applied to the military application as well. So we can leverage a lot of things, like there is transfer learning and so many techniques that are available to actually use, the kind of knowledge we generate in one kind of scenario. And actually this is the reason why some of the game kind of scenarios are generated where multi-agents cooperate with each other. And we actually want to use this scenario for machines in the, for example, tanks in the battlefield or aircrafts in the air to actually collaborate together, share information with each other, and actually fight in the real world scenario.
So if you look at, for example, segments in which artificial intelligence is divided and the impact which comes from different areas, right now, 9.6% firms are investing in the data science area, 7.8 in the business intelligence area. Then there are health plans and patient care, computer vision, speech recognition, aerospace and defense industry. So this is particularly aerospace related defense industry. Otherwise, applications of defense are in all, for example, computer vision. So many applications are in the defense industry. So natural languages processing, entertainment, and the list goes on. I could speak for a whole day just on this. Next, please. So coming to the National Center of Artificial Intelligence, let me give you a glimpse of some of the projects we are doing and, with artificial intelligence. And of course, many of them are on the civilian side. And of course, some of them have applications toward the defense side as well. So we have been able to generate the product concepts and proposals that we've generated are, 221 so far. And we are touching nearly around 635 million in funding that we've generated during the last 3 years. So the kind of projects that we've done and deployed, so reach that. So we just were inaugurated in March 2018. The first financial releases came in 2019. So you can imagine that it's just 3 years of work that we are actually displaying before you. Next. So one of the major projects, for instance, was collaboration with the Law and Justice Commission of Pakistan to develop artificial intelligence for judiciary. This would be very useful for the military courts as well. So for instance, what we've done is that digitized data from the 70 years history of Pakistan. And whenever a new case, for example, comes in, you can enter some facts about that case into the system, and most relevant case from the database, 70 years history of Pakistan database, they actually come up. And even this is made directly by the judge himself. Like the AI, of course, does right now the system AI does not suggest a judgment. So, but even in that case, for example, relevant cases in front of the judge can help the judge make a more informed decision, right? Thank you. Next. So I'll just, go quickly through the slides. We've been working very closely with Pakistan Air Force for establishment of the CENTAIC, and we have good close collaboration. Next, please. Next. So this is one of our projects which will be displayed in detail tomorrow by one of our contestants in the competition. And this is a medium.ai. It's a company spin-off from there. This actually looks at all the media channels simultaneously. You know that 5th generation warfare is actually not just in the battlefield, but in every home, right? With the digital devices and television and everything coming into everybody's hands. And this, for example, documents whatever is being said by any person, who is saying what, and all the content analysis behind it, giving you a complete summary of whatever is happening during the day as well. So complete perception of whatever is going on in the media. Next, please. Many of these technologies have now spun off into companies like the last one. And this one, for example, the system where we, for example, detect various vehicles, some of the applications, for example, for parking spaces. Next, please. So this is another one for tickets, for example, like how many suspicious vehicles or persons could any human possibly remember. So this is AI-based system which is actually reading the number plates, actually looking at the make and model of the car, and based on that, it can extract which kind of vehicle, for example, needs to be stopped. If a suspicious vehicle comes in, it can relate back with the database and stop that vehicle right there. Next, please. So this is another system, for example, in which you can detect weapons, for instance. This is object detection. You're actually detecting weapons. And on the left and on the right, you can see activity recognition. So for example, one person is crossing, in a different side, not walking in the direction where everybody else is going. So this is statistical modeling of the dominant motion in the scene. So we can actually predict with a lot of accuracy whenever he is doing something different from the crowd. So this is good for mob analytics. Next, please. So this is an example of what we do with the mob analytics. So many persons are there. Whichever persons, for example, are holding sticks are pointed out separately, right? So on the right, you can actually distinguish activity recognition. For example, if two persons are fighting with each other, or for example, a gun is being pointed, because in a real scenario, guards are always going to be carrying weapons, right? So detect weapon only may not mean a lot. But something being done with the weapon actually means something, right? So this is why, for example, this activity recognition, and when the gun is pointed at someone, that's when we raise the alarm. Next, please. So this is just a glimpse from the lost and found system that we've been able to deploy with the Punjab Safe City Authority. And I'm happy to share with you that in the past year, in one of the very major events that was taking place in Lahore, we were actually able to catch some of the miscreants using the artificial intelligence-based face recognition technology, using our completely home-developed systems. Actually. Next, please. So these are medical applications. One system that we've developed for thalassemia detection and assessment. Another one for breast cancer. Next, please.
So these are two other systems. BrainWays is a very popular system for brain like tumor detection and cancer anticipation, lifespan prediction, and also for tuberculosis, COPD, and other pulmonary diseases. Next, please. Just actually, I think day before yesterday, our system has been deployed in the PIMS hospital in Islamabad. So another initiative, which for example you should all know about, is the AI Towers competition that we organized. So this is initially it was scheduled in these dates, but we moved it forward because of ideas, and it's going to be scheduled inshallah in the coming February, inshallah. So if you want to, for example, we are going to sponsor a prize money of ₹1,000,000 in this for the winner. And if some company wants to sponsor, for example, a particular challenge that you want to entice people to develop a product of this sort, and you want to offer a prize money for the one who develops best product, you're welcome to contribute this. And otherwise, also you're welcome to visit. Next, please. Also, like to address the need of the defense market and particularly the shortage of AI human power, which could actually develop efficient algorithms, a professional level human manpower which is required. We've started the Certified Artificial Intelligence Program, the CIP certification. So this is an expert level certification. If you want your team to enroll in this, you want them to develop the expertise, it's a 4-month long course in which they can develop their expertise. Doctor, last 2 minutes. Already finished, sir. Okay. Next, please. So this is my contact information. If any one of you would like to contact me, so you're very much welcome to do that. I got the time up reminder, so this is why I really hurried after the things. Thank you very much. I hope you enjoyed the talk, and I hope we interact and get on some real AI stuff. Thank you. मैं असल में इस इवेंट के साथ 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 और 14 का इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से ये माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफेंस एग्जीबिशंस। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका, वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफ़ेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर, बिकॉज जहाँ पे भी ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी वो ख़त्म हो गई। बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर इन द लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है, और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे या उससे बेहतर लेवल पे जा सकें। मेरा ताल्लुक उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर्ड था डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़। एंड पहली मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, बैक एंड पर रख के काम करते थे, बट देन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे हैव बिकम टू गुड फॉर दिस इवेंट, एंड माशाल्लाह इतने अरसे के अंदर दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, एंड इंटरनेशनली नाउ बदर एक्सपो सॉल्यूशन इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट मैनेजर्स इन पाकिस्तान। बहुत अच्छा काम है। बचत एक्सपो, जो कि आप गुज़िश्ता दिनों नाम सुना कि एक्सपो सेंटर में पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक बचत एक्सपो रमजान में लगाई गई, सब आवाम को हुआ, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स रह गए। इस सेकंड फेज भी होना चाहिए, जो कि इंशाअल्लाह ताला 23 से 25 जून के अंदर इसका इनेकाद किया जा रहा है। तो मेरी अपील है तमाम ही होलसेलर्स के उसमें पार्टिसिपेट करें। मैं बदर एक्सपो का शुक्रिया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद खावर है और मैं QNN फ्लेवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। QNN फ्लेवर जो है बेसिकली ड्रीमलेस फूड ब्रांड है, ठीक है। इस वक्त हमारे पास यहाँ पे जैम की पूरी रेंज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास रेड एप्पल जैम, गोल्डन स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और मैंगो जैम है। इसी तरीके से चटनी है, हमारे पास सॉसेस हैं, मिक्स पिकल है, और पूरी इसकी पूरी रेंज है जिसमें जिंजर गार्लिक की रेंज है, रेड चिली, ग्रीन चिली, पपाया वगैरह तमाम पेस्ट वगैरह है। केचप भी है हमारे पास, और रेड चिली पेस्ट भी है, सिरप्स भी है। इस वक्त हम यहाँ पे एक्सपो में मौजूद हैं और बदर एक्सपो ने ये एक्सपो लगाया है, और इस पर हम लोग 20% फ्लैट ऑफ दे रहे हैं अपनी ऑल रेंज के ऊपर, ठीक है। सीज़न 1 में भी हम लोग यहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इग्लू पाकिस्तान
पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड को इस वक्त यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इग्लू पाकिस्तान डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। हमने अपनी इग्लू आइसक्रीम और हमारी होममेड की रेंज है वो कंप्लीट हमने यहाँ बदर एक्सपो, जो कि बदर एक्सपो की तरफ से बचत बाज़ार लगाया गया है एक्सपो सेंटर कराची में। तो हम इस वक्त हॉल नंबर 3 में मौजूद हैं। आप लोग विज़िट करें और अपनी फैमिलीज़ को लेकर आएँ। और इस बचत बाज़ार में डिफरेंट स्टॉल्स वालों ने डिफरेंट जो है वो यहाँ पे डिस्काउंट्स ऑफ़र किए हुए हैं हर ब्रांड ने। तो आप लोग आएँ और ये डिस्काउंट्स जो है वो अवेल करें और इग्लू का स्टॉल भी विज़िट करें। और हमने जो है अपनी आइसक्रीम रेंज के ऊपर और अपनी होममेड पराठा की रेंज के ऊपर डिफरेंट डिस्काउंट्स ऑफ़र किए हुए हैं। आप आएँ और अवेल करें डिस्काउंट्स। It's 4 p.m. Hello, greetings. I'm Badar. I'm director at Powerhouse Private Limited. And we are very excited from Powerhouse to participate in IEEE 13 Industrial Fair, which is organized here in Karachi by IEEE, and we are participating as a platinum sponsor. We believe that IEEE platform is a great platform which benefit the industry, and it gives us a opportunity to interact with the B2B customers and some foreign delegates who are going to attend this great exhibition here in Karachi. IEEE platform and fairs are excellent fairs, and they are providing opportunity for all the commercial entity to participate and exhibit their products so that we can get the benefit, and we can also participate in many other exhibitions organized by IEEE. So I congratulate once again to IEEE for organizing such a great exhibition as they always do. And we see that this time again we will meet all our business colleagues and our customers and different people who are going to attend this exhibition. So thank you very much. Look forward to see you. ये जो हम करने जा रहे हैं एक्सट्रीम शूटिंग कॉम्पिटिशन, ये हैंडगन का इवेंट होगा। पिस्टल साथ जो माहिर निशानाबाज हैं ये उनके लिए। एक तो हम जो नए शूटर्स हैं उनके तो हम करते रहते हैं। ये एक प्रोफेशनल है जो कि दुनिया में मुल्कों में होता है। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं। हमारी टीम्स चाहती थी कि मुल्कों में ये इवेंट खेलने के लिए, तो हमने की जो चीज़ें बाहर हुई हैं, लेट्स ब्रिंग इन पाकिस्तान अंडर इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बैनर, और हम उसको यहाँ पे फर्स्ट टाइम अरेंज करने जा रहे हैं। इसकी से खास बात यह है कि जितने भी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन हैं पाकिस्तान में, चाहे वो नेवी है, आर्मी है, रेंजर्स है, एएफ है, या बाकी प्रोविंस की जितनी पुलिस है, कमांडोज हैं, इन सबको हमने इनवाइट किया है कि वो अपनी स्किल्स के साथ जो अपने उनके प्रोफेशनल शूटर्स हैं वो आके इस इवेंट में हिस्सा लें और अपनी काबिलियत को सामने रखते हुए इसमें सबको चैलेंज किया है। उन्हें कुछ इसमें खास इनामत रखे हैं, सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज रखी हैं। उसके अलावा हम ये अरेंज करने रखे तो यूनिफॉर्म पर तो हम शूटिंग करते रहे, तो सिविलियन जो थे जो शूटर्स हैं उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट आई हम भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। तो हमने एक सिविलियन कैटेगरी रखी है कि उसमें जितने सिविलियंस हैं जिनके लाइसेंस वेपन हैं वो आके अपने शूटिंग की जो स्किल्स हैं वो आजमाएं और इसमें एक ओपन कंपटीशन में हिस्सा लें।
फिर एक हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है 50% हमारे 50+% हमारी वुमेन की आबादी है। तो खवातीन की हमने स्पेशल कैटेगरी रखी है। ये जो भी खवातीन जिनकी वेपन हैंडलिंग बेहतर है या जो लाइसेंस वेपन है वो आके इसमें हिस्सा लें और इसमें भी अपनी जो स्किल्स है उसको आजमाएं। तो ये हमने इनिशियली 6 सितंबर को डिफेंस डे पे रखा था, मगर क्योंकि चिलम का मौका है और इसमें तमाम हमारे लोग मसरूफ हैं तो हमने इसको 9 सितंबर पर लेके आए। तो 9 सितंबर में फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान शूटिंग कंपटीशन होने जा रहा है। इसमें तमाम नेशनल और इंटरनेशनल शूटर्स हिस्सा लेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे कि इससे पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो बाहर जाए और ये हम दिखाएंगे कि जी पीसफुली लोग यहाँ पे बेहतर तौर पे इस चीज़ को करते हैं। तो ये मेरी तरफ से और सिंध पुलिस की से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उनकी सबके साथ हम इसका कर सक रहे हैं और इसमें जो भी लोग हैं सबको मैं इनवाइट करता हूँ कि हिस्सा लें, अपने स्किल्स आजमाएं। इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ बद एक्सपो का, उनकी टीम का, कि वो इसको ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं और इसको हम एक प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि जो इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करें और ये जब हम इसको प्रोजेक्ट करें तो एक बेहतर तौर पे पाकिस्तान के इमेज को दुनिया के रख सकें। थैंक यू। अच्छा मकसूद साहब, ये बताइए कितनी रोजा कॉम्पिटिशनशिप है, इसमें जो है इसका रजिस्टर करेंगे उनकी जरा डिटेल। 1 डे कंपटीशन सुबह 9 बजे शुरू होगा, शाम को 5 बजे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी और इसके अंदर जो लोग मास्टरफिया के जो हिस्सा लेने आ रहे हैं, जो उनके साथ गेस्ट आएंगे, उनके हमने एक ट्रेडिशनल तरीके से फूड स्ट्रीट टाइप का बंदोबस्त किया हुआ है जिसपे पाकिस्तान के चारों सूबों के खाने हम आप लोगों के लिए, जो आप दोस्त आएंगे उनके लिए, जो लोग हिस्सा ले रहे हैं और जो गेस्ट आएंगे उनके लिए हमने वो रखा है ताकि एक ट्रेडिशनल तरीके से उनको हम वेलकम कर सकें और उनकी हॉस्पिटैलिटी कर सकें। तो ये एक मेहमान नवाजी होगी सिंध पुलिस की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों के लिए जो इसमें हिस्सा लेंगे और जो देखने आएंगे। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर इमेज है जो कि हम पेश करेंगे दुनिया के आगे। न सिर्फ कंपटीशन हो रहा है बल्कि ये सिंध की रवायत के हिसाब से हम उनको मेहमानों का खास तरिके से इंतजाम भी किया हुआ उनके खाने। इसमें इस टाइम जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो 60+ लोगों ने रजिस्टर किया है तमाम पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से और लोकल। ये वो लोग हैं जो कि यूनिफॉर्म पर्सन है। उसके अलावा सिविलियन कैटेगरी मिला के टोटल जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है 140 लोगों ने इसको अपने आप को रजिस्टर किया है। प्राइस हमने उसमें रखा है कि 1 लाख फर्स्ट प्राइस है, सेकंड प्राइस 50,000 है, थर्ड प्राइस 30,000 है। इसके अलावा हम उनको मेडल्स देंगे और ट्रॉफी देंगे और सर्टिफिकेट्स देंगे। जो पिस्तौल की गोलियां हैं वो जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें जो खुद खेला होता है उसकी अपनी तरफ से होती हैं। उसके लिए हमने POF वाह फैक्ट्री को रिक्वेस्ट किया कि वो अपना स्टॉल लगाए, वहीं से वो बुलेट्स ले सकेंगे और वहीं से वो अपनी शूटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। और प्रैक्टिस के लिए भी हमने 3 दिन पहले अपनी शूटिंग रेंज को ओपन किया है ताकि वो आके अपने प्रैक्टिस करें ताकि मैच डे पे कोई उनको नया सरप्राइज ना मिले। तो ये सब के लिए हमने एक ही जैसा स्टैंडर्ड रखा है ताकि सब अपनी जो है काबिलियत को आजमा सके। इस टाइम जो पाकिस्तान में जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स हैं जो कि कॉन्सुलेट्स में काम कर रहे हैं, सब हमारे इंटरनेशनल मेहमान हैं। उनको हमने जब इन्विटेशन भेजी है तो जो कॉन्सुलेट्स में सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल हैं वो कुछ आएंगे जो यूनिफॉर्म कैटेगरी में करेंगे और जो सिविलियन है वो सिविलियन कैटेगरी में। तो जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं दे आर ऑल्सो इन्वाइटेड और वो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा सर, ये इस बेस्ट इवेंट को करने का मकसद जो है वो जरा थोड़ा सा। मकसद ये कि हमारे लड़के, आप ये मेरे शूटिंग टीम का खड़े हो जाएं, ये हमारी शूटिंग टीम के कैप्टन हैं और इसके अलावा इंस्पेक्टर शबीर जो कि अभी ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं कराची में। ये वो लोग हैं जो अपने शौक से इस स्किल को सीखा और इन्होंने वॉलंटियर कर जाके अपने इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लिया। तो वो जो लोग वहाँ पे देख के आए, सीख के आए हैं, हम उस चीज़ को उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंडर यहाँ पे इनकार कर रहे हैं। नॉर्मली ये मैसेज पाकिस्तान का जो एक नेगेटिव मीडिया इमेज है कि पता नहीं यहाँ पे क्या होता है और सेफ नहीं है, तो ये उनके लिए मैसेज है कि यहाँ पे सब चीज़ें नॉर्मल हैं। जैसे बाहर के मुल्कों में इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं ऐसे हम भी यहाँ पे करते हैं और हम तमाम जितने भी फोर्सेज हैं उसके बीच में ये कोऑर्डिनेशन और ये भाईबंदी को हम मेंटेन करने के लिए जब हर जगह से लोग आएंगे, एक दिन अपने साथ गुजारेंगे शूटिंग में, तो एक लाइफ टाइम मेमोरी होती है जो कि शूटर या वो जो टीम वापस लेके जाती है और वो सिंध की मेहमान नवाजी से मुस्तफीद होंगे और उसको एंजॉय करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव इमेज है जो न सिर्फ विद इन पाकिस्तान हम दे रहे हैं, एक इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी हम दे रहे हैं कि यहाँ पे
चीज़ें बेहतर हैं, नॉर्मल हैं और हम भी वही चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो कि दुनिया में किसी और जगह पे होती है। देयर नो एज लिमिट, सिर्फ आपका लाइसेंस वेपन होना चाहिए और या फिर आपको यूनिफॉर्म पर्सन होना चाहिए, ये 2 कंडीशंस हैं और उसकी हिस्सा लेने के लिए। सर रिसेंटली हमने देखा कि जब शहर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ा था तो आप लोग काफी एक्टिव थे, फोर्सेस भी बनाई गई थी। अब वायलेंस ज्यादा हो गया स्ट्रीट क्राइम में, तो अब क्या एसएसक्यू कुछ प्लान कर रहा है दोबारा से स्ट्रीट क्राइम में कोई एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा? अभी रिसेंटली आपने 15 का जो गेट काउंटर हुआ था आपने विटनेस किया, वो लोग कौन थे? वो एसयू ही ऑपरेट कर रहा है, एसएसयू की टीम वहाँ बैठी हुई है। ये स्ट्रीट क्राइम में हमारा एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाते हैं डिफरेंट तरीके से। जब भी हमें रिक्वायर्ड आती है कि कहीं पे अगर कोई सेंसिटिव एरिया है या ज़्यादा है तो हम उसमें पेट्रोलिंग भी अपनी बढ़ाते हैं, मगर उसके अलावा जो 15 की जो सर्विस है दैट इज़ रन बाय द एसएसयू, उन्हीं के लोगों से, और हम पब्लिक की मदद उसमें कर पा रहे हैं। उनकी एक इंस्टेंट हेल्प की वजह से एक कॉन्फिडेंस है पब्लिक शहरियों में कि अगर हम 15 पे कॉल करते हैं तो टाइम से पुलिस आ जाती है और ये डेटर से खौफ क्रिमिनल्स के लिए उस चीज़ को रोकने का बायस बनता है। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी हम चीज़ें बेहतर कर सकते हैं उसको कर रहे हैं और आइंदा इसी तरीके से करते हैं। स्केटिंग फोर्स बिल्कुल बनाई थी। स्केटिंग फोर्स का मकसद ये था कि जो हमारे स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं वहाँ के लिए, अभी जैसे स्टेडियम में वुमेन क्रिकेट टीम आई हुई है, अब जब इसमें हम पब्लिक के लिए इसको खोलेंगे तो जो स्केटिंग के जो लोग होंगे वहाँ पे लोगों की हेल्प करने के लिए मौजूद होंगे। जो स्केटिंग फोर्स का था कि शहर के अंदर जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सके या जो वॉकिंग जगह है वहाँ पे करें, मगर यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है तो इसलिए उनको हमने लिमिट किया है। वो 20 लोगों की टीम है, वो जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है हम उसको भेजते हैं, मगर मैं उसको हमने स्पोर्टिंग इवेंट के लिए रखा है। अभी आप देखेंगे जब टीम होगी, इनकी मैचेस होंगे, जब खवातीन आएंगी तो आप लेडी कमांडोज को भी स्केटिंग में देखिए, उनके लोगों की हेल्प करते हुए, उनके साथ गाइड करते हुए, और बाकी हमारे मेल कमांडोज को भी देखेंगे। दैट इज फॉर स्पोर्टिंग इवेंट्स ओनली। साहब ये बताइएगा कि इस इवेंट का बजट क्या है? दूसरा ये बता दीजिएगा कि कराची में हॉटस्पॉट बनाए गए थे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, और ये भी कहा जाता है कि एसएसक्यू कमांडो जो है वो सड़कों पे रहेंगे, जो थाना पुलिस है वो गली मोहल्लों को देखेगी। कहीं पे भी एसएसक्यू कमांडो की गाड़ियां जो पेट्रोलिंग है वो दिखाई नहीं देती है। जिस तरीके से आपने बताया कि 15 में मुकाबला किया और हमने रैपिड रिस्पांस किया, तो 15 की अगर मोबाइल अलग से थी, लेकिन एसएसक्यू अपने कमांडोज है हॉटस्पॉट पे खड़े होते थे, एक दो जगह तस्वीरें भी शायद थी, लेकिन उसके बाद कहीं दिखाई नहीं दी। जब कराची पुलिस की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है, हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो हम उसको डिप्लॉय करते हैं। उसके अलावा जो 15 की भी हमने स्ट्रेथिंग की है वो एसएसयू के कमांडो से की है, तभी ये पॉसिबल है कि 3 शिफ्टों में वो 24/7 काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो जब भी मैं रिक्वायरमेंट आएगी मजीद तो हम इंशाल्लाह उसी तरीके से हॉट स्पॉट्स को भी कवर करेंगे, उसी तरीके से लोगों की मदद के लिए क्विक रिस्पॉन्स भी करेंगे। अच्छा, बजट के हवाले से इसमें कोई बजट नहीं है। जो आपकी फीस है उसी से हम उनका जो खर्चा वही निकालें, प्लस स्पॉन्सर्स का जो फूड अरेंजमेंट है वो है। फीस हमने 2 रखी है फॉर यूनिफॉर्म, 5000 फॉर इंडियन पर्सन। फीमेल कैटेगरी की 2000 फीस। अच्छा सर, पूरी दुनिया में जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो एसएचयू को फॉलो कर रहे हैं और एसएचयू की जितने भी इवेंट हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए वो बात कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक पाकिस्तान की ये बाइस फख्र है कि हमारा मुल्क में एक ऐसा इदारा है जिसको हम एग्जाम्पलरी तौर पे पेश कर सकते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस से खाली न सिर्फ ये कि उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, बल्कि आगे लोगों के लिए हम एक उम्मीद की किरण है कि जब एसएसयू के जवान बेहतर हो सकते हैं, बाकी पुलिस भी हो सकती है। तो एक बेहतरी की तरफ एक हमारा इकदाम है। इस टाइम हम परसेंटेज में देखें तो हम 2% है पुलिस के, तो 2% बेहतर हो गया है। 98% इंशाल्लाह पुलिस का बेहतर होना बनता है। इसी तरीके से अगर लोगों की हम खिदमत कर सकें, उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकें, तो पब्लिक का ट्रस्ट है इसमें वो बेहतर हो सके। ये बता दीजिए ये शूटिंग रेंज कहाँ मुनक्किद की जाएगी? जी, ये हमारा चौकंडी में एसएस का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हम इसको कर रहे हैं और वहीं पे हम सारा कुछ शूटिंग रेंज सारा कुछ वहाँ पे हमने बनाया हो जाए। साला टाइम लगेगा, चीज़ों को सिस्टम ठीक होने में जनरेशंस लगती है। एक उसकी तरफ कदम है। शुरू आप देखें कि मोटरवे पुलिस का जो इमेज था कितना बेहतर हुआ, उस पुलिस के लोग जाके वहाँ काम करते हैं तो वो चीज़ें बेहतर होती हैं और पब्लिक इससे मुतमईन होती है। इस तरीके से एसएसयू की तो ये एक थोड़ी सी स्ट्रगल है, टाइम लगेगा इन चीज़ों को, मगर ये कि बेहतरी की तरफ डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। वक्त आएगा कि सारे लोग इसी तरीके से बेहतर पे काम कर सकें।
सर बिना के लिए डिजायर है साहब की टारगेट है तो उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो मीडिया के दोस्त हैं जिनके लाइसेंस वेपन है उनका आपस में मुकाबला करें, उनके लिए हम स्पेशल टारगेट रखेंगे। आप अपने वेपन के साथ हैं, वो मेरी तरफ से फ्री ऑफ चार्ज है। आप अपने स्किल्स के वेपन्स के साथ हैं, वहीं पे अपने आपस में मुकाबला करें, उसकी हम प्राइस की कैटेगरी अलग से करें। उसमें आपसे रिक्वेस्ट प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने बजट भी किया, क्या हुआ आपको? सर और ये होने वाला है, बहुत जल्दी आगाज हो जाएगा, तो आपने इतना अर्से में काम किया, अब ये एक्चुअली होने वाला है, तो उसमें ना होना क्या आपके लिए फीलिंग है? सवाल से ये भी सामने चीज आ रही है कि आपने कोई चीज प्रपोज की थी, एनआरटीसी को दी थी बजट और आप नहीं चाहते क्योंकि आप बहुत ज्यादा लो कॉस्ट लेकर आ रहे थे, लेकिन आईजी ने जो एनआरटीसी को दिया, इससे क्या फीलिंग? उसमें जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना तो बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये सब लोगों को पता है हम, और उसमें हम कोशिश करें कि अपनी तरफ से बेस्ट पुट इन करें, चाहे एक्स करे या वाई करे या जेड करे। हमारी मेहनत का ये फ़ायदा हुआ कि हमने डॉलर्स में प्राइस लॉक कर दी, हमने वो मार्जिन्स ख़त्म कर दिए जो लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट की वजह से बढ़ रहे थे। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट को हाफ करके हमने जो 200 मिलियन की कॉस्ट थी 100 मिलियन में कर दी। 100 मिलियन पे ही लॉक है, चाहे वो ए टीम करे चाहे बी टीम करे। उसका ये फ़ायदा हुआ कि हमने डायरेक्शन सेट कर दी, हमने चीज़ें बता दी कि किस तरीके से होगी, और हमने एक सैंपल के तौर पे एक पूरा एक सिस्टम बाहर लगा दिया जो अभी भी लगा हुआ, इसको फॉलो करें हो जाए। तो इंशाल्लाह उसी गाइडलाइन पे करेंगे, और इसमें जब भी होगा ये मुल्क के बेहतर होगा, इस शहर के लिए बेहतर होगा, यहाँ के आवाम के लिए बेहतर होगा। तो इस चीज़ से हमने होपफुल है कि आगे भी चीज़ें बेहतर होगी। थैंक यू। मेरा नाम अब्दुल मुगीस है और मैं बीटीएल मेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सेल्स स्पेशलिस्ट हूँ, और हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स में हमारे पास कंप्लीट रेंज है, जिसमें हमारे पास कार्डियोलॉजी सेगमेंट में है, एस्थेटिक इक्विपमेंट्स हैं, और हमारे पास जो रिहेबिलिटेशन है जिसको हम फिजियोथेरेपी भी बोलते हैं वो हमारे पास हैं। हमारे पास हमें जब ये एक्सपो के बारे में पता चला, हम लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, यहाँ के मैनेजमेंट ने हमसे रब्ता किया, हमने उनको अपने बारे में बताया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे एक्सपो में सब लोग अपनी मशीन्स को लेके आए हैं। क्योंकि दुनिया न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जा रही है, रोबोटिक्स के ऊपर जा रही है। सेम इसी तरह मेरे सामने यहाँ पे हमारे पास सुपर इंडक्टिव सिस्टम है जो कि एप्लीकेटर रोबोट है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर ये हेल्प करती है, जो कि आपके बोन्स के ट्रीटमेंट्स को, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स को ये हेल्प आउट करती है फिजियोथेरेपी के अंदर, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी पेशेंट के लिए। सुपर इंडक्टिव सिस्टम जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि दुनिया में शायद ही बहुत कम कंपनीज है जो कि इसके ऊपर, चाइनीज़ बहुत जो कि क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं, जो यूएसए ब्रांड्स हैं, वो अपने क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे पास इसी तरह कार्डियोलॉजी सेगमेंट में जो कि हार्ट से रिलेटेड मशीन्स हैं, ईसीजी मशीन, ईटीटी मशीन, होल्टर, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर, एक कंप्लीट रेंज है हमारे पास उसमें। सेम इसी तरह हमारे पास 3 ट्रीटमेंट्स की मशीन्स और डिवाइसेस हैं जो कि हम लोग पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे आपके सामने फिजिकली मशीन्स भी लगी हुई हैं, हमने डेमो पे लगाई हैं। हमारे साथ एक्सपो सेंटर वाले ने बड़ा ताउन किया। मैं खुद लाहौर बेस्ड हूँ और आया हूँ यहाँ पे, और मुझे मैनेजमेंट अच्छी लगी है, यहाँ पे सपोर्टिव है, और बार बार के उन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी भी हैं, कोई मसले मसाइल वगैरह तो नहीं है। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट में रह के आपको हेल्थ प्रोफेशनल्स भी मिल रहे हैं जो कि आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। मेन चीज़ ये होती है कि पेशेंट को फैसिलिटेट किया जाए। उसको हम लोग क्या करते हैं कि पैसे चार्ज कर लेते हैं, डॉक्टर्स चार्ज करते थे, लेकिन उसको फैसिलिटी उस तरह उस लेवल की प्रोवाइड नहीं की जाती, जो कि यहाँ पे अवेयरनेस दी जा रही है लोगों को, डॉक्टर्स को बताया जा रहा है जो स्टॉल्स पे आ रहे हैं। इवन जेडीसी वाले भी आए हैं हमारे पास जो कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में फाउंडेशन है। तो हमसे भी बात की है टेक्नोलॉजी के ऊपर, और हमने डॉक्टर से भी बात की है, तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है। और फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो होनी चाहिए, और हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर ये मशीन्स होनी चाहिए। थैंक यू।
Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, in 2 minutes, I should touch upon the salience and overview of the Defence Export Promotion Organization and the ideas, mainly upon the objectives and what the organization does by itself. And thereafter, we will have a total documentary which will take the journey of the development activity of the ideas. It was raised in 2000 under joint staff headquarters, which was later placed in the Ministry of Defence in 2002. Since then, it was working under the area of ODP. The basic aim was to promote and project all the military's industrial commerce and defence export potential. All core functions of the depot are performed on corporate model with no function burden on national strata. The vision statement, which has been spelled out for the depot, reads: as a national platform, provides support to the defence manufacturing, service sector and the export chain through promotion, facilitation and coordination for sustained growth of defence exports of Pakistan. To achieve this vision, the depot basically undertakes promotion, facilitation and coordination of the business opportunities and networking for the defence industry. It organizes defence exhibitions both inland and abroad, including the flagship event of the IDRs, establishes Pakistan Pavilion across the globe. Gentlemen, in this regard, depot establishes 12 to 14 Pakistan Pavilions annually across the globe in different countries for our own defence production enterprises. We also had the unique honor of organizing a single country exhibition in Iraq, which was actually mentioned a little while ago. Regarding national exhibitions, the depot has been instrumental in organizing 2 editions of the Supplies and Vendors Defence Exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the Defence Exhibition at the Rawal Expo at Rawalpindi in concert with the Rawalpindi Chamber of Commerce and the Defence Port Turkey at Islamabad. The Ideas has been a flagship event which is conducted biannually since 2000 and it has grown over a period of time both in stature as well as in size. Other than these core subjects, the depot also maintains an international standard display center here at Islamabad. We have carried out an extensive mapping of the private defence industry wherein the potential buyers across the globe are now directly interfaced with public as well as the private defence manufacturers. A comprehensive defence orders catalog has been prepared, which is not only available online but has also been provided to all our foreign missions and is presented to all the visiting dignitaries. In addition, the depot also conducts seminars other than the main seminar during ITRs. Now, I will just briefly touch upon the centerpiece of the recent efforts of the depot, which is basically focused on the advertising of the private defence industry, and wherein the private sector is facilitated for international participation. It is happy to note that 8 private companies participated in World Defence Show KSA without the government support. However, this participation can increase manifold with the government support in the future. We are also focused on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our different defence, national as well as international exhibitions. Besides, we are focused on the suppliers, vendors and the small-scale manufacturers, basically to link them with the large-scale manufacturers and our private and public large-scale defence production enterprises. Now coming over to the flagship event of IDRs. As you are aware, IDRs is the flagship event of international stature for Pakistan, which is a sought-after rendezvous for business and knowledge sharing. With synergistic interaction of the global defence industry, it serves as a shared platform both for global peace and stability. International recognition and participation thus truly reflects deeply embedded, mutually beneficial relations. Gentlemen, the main objectives which are actually desired to be accrued out of the ideas include provision of the business opportunity for the defence industry,
both for the international exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as the international exhibitors. Demonstrate organizational skills and increase in the defense exports. Image building of the country. Promulgate Pakistan's point of view internationally. And reinforce diplomatic efforts in the realm of defense diplomacy. Now with this gentleman with a brief introduction, I shall now take you through a documentary which will actually show you both these whatever I have spelled out about ideas and the depot. How did it actually reach to this where we are standing today. Thank you very much. जी मेरा नाम सैयद असद मशदी है और आई बिलोंग टू मिलिट्री व्हीकल्स पार्ट्स बिजनेस और बेसिकली ये जो आइडल एक्सपो है इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल हो जो कि डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। एक विंडो पे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स और मैं बड़ा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा डेपू को जिन्होंने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है आफ्टर दिस लॉन्ग कोविड जो सारी दुनिया ने फेस किया है। और उसके बाद ये एक जब दुनिया में B2B मीटिंग पॉसिबल नहीं हो रही थी तो मेरा ख्याल है ये डेपू ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि लोग अपने एंड यूजर्स तक यहाँ पे पाकिस्तान मीटिंग अरेंज कर सके, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सके और अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सके। सो मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड वेंडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं, उन्होंने अपने डिस्प्ले भी किया है। एट द सेम टाइम बहुत सारे फॉरेन कंपनीज जो है उन्होंने भी यहाँ पे डिस्प्ले किया है जो कि बहुत अच्छा एक इंकरेजिंग पॉइंट है पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के लिए भी। और साथ साथ ये भी दिखाया जा सकता है दुनिया को कि यस वी आर रेडी, वी आर हेयर टू सर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री है एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करती है। सो ये जितना भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है विन विन सिचुएशन था फॉर बोथ साइड्स, फॉर द प्रोक्योरमेंट एजेंसीज और फॉर द जितने जो इसके सेल कर रहे थे या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे या अपने नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने आए थे। सो थैंक्स टू डेपू, थैंक यू वेरी मच। शॉपिंग करके लेके जा रहे हैं यहाँ से, कुछ बचत भी हुई नहीं हुई? बस बचत तो है, बचत के बिना तो कुछ लेते नहीं। महंगाई इतनी हो गई, अब बचत की शुमार में हम घूमते रहते हैं कहीं पे बचत मिल जाए। ये बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने जो आपके लिए बाजार लगाया, आप मुतमईन होके जा रहे हैं? हाँ हाँ मुतमईन होके जा रहे हैं। हाँ बहन, आप कैसी कोई शॉपिंग वॉपिंग की आपने, मुतमईन होके जा रही हैं? अच्छा ये बात नहीं कर रही है, लेकिन आपने इतना ज़्यादा सख्ती की हुई है वो बात ही नहीं कर रही है, लेकिन आप इंजॉय करके तो जा रहे हैं यहाँ? बिल्कुल एंजॉय करके जा रहे हैं हम। लगा यहाँ के? जी अच्छा लगा। बदर एक्सपो सॉल्यूशन ने जो बचत एक्सपो लगाई है, आपको आप मुतमईन होके जा रहे हैं? बिल्कुल मुतमईन। कुछ रेट कम मिला? जी मिला। सुकून होके जा रहे हैं? बिल्कुल सुकून हो गया। लोगों को मशवरा देंगे कि यहाँ आए और शॉपिंग करें?
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ऐ अल्लाह इस दावत कामिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज के रब तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाया मकाम फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है और क़यामत के दिन हमें उनकी शिफात नसीब फरमा बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं फरमाता मैं असल में इस इवेंट के साथ 2012 से एसोसिएटेड हूँ 12 और 14 का इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी उसके बाद से एक माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफेंस एग्जीबिशंस जो लास्ट टाइम नहीं हो सका मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर बिकॉज जहाँ पर भी ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्वमेंट होती वो ख़त्म हो गई बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर इन द लाइन और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे या उसी लेवल पे जा सकें। मेरा ताल्लुक उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर्ड था डेपो के अंदर और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़ एंड पहली मरतबा जब ये आए तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, बैक एंड पे काम करते थे बट देन with the passage of time they have become too good for this event and mashallah itne arse ke andar they have improved a lot and internationally now Badar Expo Solution is recognized as one of the best event managers in Pakistan. बहुत अच्छा काम है।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असलम खान है, ब्यूरो चीफ दुनिया टीवी कराची। 11वीं आइडियाज़ के हवाले से आज ब्रीफिंग रही और हमें जिस तरह बताया गया है कि तकरीबन 29 पार्टिसिपेंट होंगे, 100 से ज़ायद मालिक हैं जो यहाँ पर इसमें शिरकत करेंगे। पहली आइडियाज़ से हम यहाँ तक पहुँचे कि इसमें 2 नए ममालिक भी आ रहे हैं और ऐसे ममालिक भी हमारे पास आ रहे हैं जिनके साथ हमारे जो बरादराना ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात हैं। और मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा तैयारा है जेफ थंडर 70, उसमें बहुत से ममालिक ने खरीदारी में दिलचस्पी खरीदारी किया। माजी में अगर हम बात करें, हमारा अलजरार टैंक बहुत से उसकी खरीदारी में दिलचस्पी रखते थे और अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर पर आज की ब्रीफिंग बहुत हौसला अफजा हमारे लिए कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में भी किसी भी तरह पीछे नहीं है। हम पहली नुमाइश की अगर हम बात करें वो इंतहाई शानदार और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दिफाई नुमाइश है ये भी मजीद जो कामयाबी के झंडे गाड़ेगी, मजीद कामयाब होगी और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा कि हर दिफाई नुमाइश में हमें ये मालूम होगा कि हम दिफाई मैदान में किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो कौम है उसके लिए भी ये बायस इत्मीनान है कि उसकी जो मुसल्लह अफवाज है वो पूरी तरह तैयार है। किसी भी दुश्मन की जारियत का मुकाबला करने के लिए हम जो है वो पूरी तरह तैयार और डटे हुए हैं। आइडियाज़ 2022 जो कि वैसे एक बाइनियल इवेंट हर 2 साल के बाद होता, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से जब 2020 हम इसको नहीं कंडक्ट करा सके तो ये अब 4 साल के बाद हो रहा है। तो उसकी वजह से अब इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है और हम इंशाल्लाह पूरी तरह के लिए तैयार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 में जिस तरह कंडक्ट कराया गया था उससे मज़ीद बेहतर होगा और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा। इसमें हमारे पास काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशन की कन्फर्मेशन आ चुकी जो कि पूरी दुनिया के तमाम बड़े आज़मों से हमारे पास डिग्निटरीज आ रहे हैं और एग्जिबिटर्स भी हमारे पास यूरोप, एशिया, हर तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये है कि न सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री को भी इसके लूप लेके आएँ और उनको भी एक आउटलेट दें ताकि वो दुनिया के सामने अपना जो प्रोडक्शन है उसको शोकेस कर सके। इसमें इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंटरनेशनल लोग भी आए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें एक बहुत बड़ा के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं या जो हमारे लोकल लोग हैं कि वो जो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज हैं, OEMs हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और इसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल कंपनीज हैं एट टाइम्स उनके भी जॉइंट वेंचर्स होते हैं बाहर के मुल्कों की कंपनियों के साथ। तो डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा सा इस लेवल का ये एक इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और बहुत हाई लेवल जैसा कि मैंने आपको बताया आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ जब एक दफ़ा पाकिस्तान में इसका इनेकाद किया जाएगा तो इसका बहुत ज़बरदस्त और बहुत पॉजिटिव मैसेज एक जो लोग यहाँ पर आएंगे वो लेके जाएंगे। उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक बहुत बड़ा इवेंट करा सकता है और तमाम तर जो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब हमारे साथ कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं हैं जो हुआ करते थे और इस तरीके की चीज़ भी। और आजकल जो फ्लड के बाद के जो हालात हैं उसके बाद इस तरह का एक इवेंट कंडक्ट होना ये हमारी इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम मुनक्किद करवा रहे हैं जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स में होगा, जिसका सेगमेंट 1 ईयर 1 जो है वो आइडियाज़ के पहले दिन उसका इनेकाद किया जाएगा और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इसी तरह जो सेकेंड ईयर जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट करा जाएगा दैट इज सेकेंड डे ऑफ आइडियाज़, उसके अंदर जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इस पे काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो आगे अपना काम प्रेजेंट करेंगे। और ये इन प्रेजेंट करने वालों के अलावा 2 दिन हमने अपने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स को भी इनवाइट किया हुआ, वो इनको सुनेंगे और डेफिनेटली कुछ इनसे सीख के जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू है कराची एक्सपो सेंटर उसके बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का जो आउटडोर एरिया है और जो एग्जीबिशन हॉल्स का एरिया, सब के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है और इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन को मीट करते हुए स्टार्ट से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। इस मोमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि पैटर्नेज हमेशा हमें मिलती रही है, पास्ट में भी मिली है और इस दफ़ा भी आपने खुद देखा कि हमारी जो 2 स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग्स थी दे वर हेल्ड एट CM हाउस। साहब वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने उसको शेयर किया और वहाँ पर तमाम गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स मौजूद थे। जिस तरीके से CM की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली और उनका बड़ा पॉजिटिव ने इम्पैक्ट देखा कि
जब सिंध गवर्नमेंट ने अपना साथ हमें दिया तो उससे चीज़ें बहुत हमारे लिए आसान Assalamu alaikum. My name is Mohammad Arsalan Khan. I am VP Sales at Shibli. Shibli is Pakistan's only private manufacturer of thermal images. We have come to Ideas the third time. We have been regular participant in the Ideas Expo. Ideas is a very good platform for Pakistani companies, private or national, to demonstrate what sort of we have in the defense industry, and we can what sort of capabilities we can export and assist the other armies of the world. I would also like to thank Badar Expo Solutions because Badar Expo is basically organizing the whole event and they're doing a very good job. We have launched two new SCUA MP and SCUA Mini at Ideas, which are binoculars with the LRF. This is this is a SCUA MP mounted over here, which is a LRF based SCUA binocular that can be used in daytime or night time to give the forces image with the exact and accurate range of the target. Thank you. आइडियाज़ 2022 जो कि वैसे एक बाइनल इवेंट है, हर 2 साल के बाद होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से जब 2020 में हम इसको नहीं कंडक्ट करा सके तो ये अब 4 साल के बाद हो रहा है। तो उसकी वजह से अब इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और हम इंशाल्लाह पूरी के लिए तैयार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 में जिस तरह कंडक्ट कराया गया था उससे मज़ीद बेहतर होगा और इंटरनेट पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा। हमारे पास काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशंस की कंफर्मेशन आ चुकी हैं जो कि पूरी दुनिया के तमाम बरे-आज़मों से हमारे पास डिग्नेटरीज़ आ रहे हैं और एग्जिबिटर्स भी हमारे पास यूरोप, एशिया, हर तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये है कि न सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी इसके लू में लेके आएँ और उनको भी एक आउटलेट दें ताकि वो दुनिया के सामने अपना जो प्रोडक्शन है उसको शोकेस कर सकें। इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंटरनेशनल लोग भी आए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें एक बहुत बड़ा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं या जो हमारे लोकल लोग हैं कि वो जो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज हैं, OEMs हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और इसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल कंपनीज हैं एट टाइम्स उनके भी जॉइंट वेंचर्स होते हैं बाहर के मुल्कों की कंपनियों के साथ। तो डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा साइन है। इस लेवल का ये एक इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और बहुत हाई लेवल जैसा कि मैंने आपको बताया आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ जब एक दफ़ा पाकिस्तान में इसका इनेकाद किया जाएगा तो इसका बहुत ज़बरदस्त और बहुत पॉजिटिव मैसेज जो लोग यहाँ पर आएंगे वो लेके जाएंगे। उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक बहुत बड़ा इवेंट करा सकता है और तमाम तर जो उनका बहुत शुक्र है कि अब हमारे साथ वो सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं हैं जो हुआ करते थे और इस तरीके की चीज़ होगी। और आजकल जो फ्लड के बाद के जो हालात हैं उसके बाद इस तरह का एक इवेंट कंडक्ट होना ये हमारी इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम मुनक्किद करवा रहे हैं जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स में होगा, जिसका सेगमेंट 1 टियर 1 जो है वो आइडियाज़ के पहले ही दिन उसका इनेकाद किया जाएगा और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इसी तरह जो